I have just one question. Mm-hmm. These are the people who go back and watch all kind of obscene things on their mobile phones, yet they have the audacity to sit and comment. All of these men who are saying, you are Halima Khatun, please stop doing this. You are Muslim, please stop wear clothes. Don't show. All of these people. I have a question. Pakistan mein badhte hue cases about all the abuses, all the child abuses that are happening in terms of house help, on the street harassment बढ़ रही है, लोग पागल हो रहे हैं. मैं समझती हूँ आपकी बहुत ज़्यादा आप frustrated है अपनी life के अंदर. बट ये हिपोक्रेसी का कोई नेक्स्ट लेवल हो चुका है कि आप किसी भी बंदे को मतलब आप नजर झुका लो, हट जाओ वहां से. Why are you watching her pictures? Why are you on her Instagram if you just cannot tolerate the fact कि यार ये बंदी she has a different, इसका lifestyle different है, इसके set of values are totally different, she's been brought up differently, besides her culture. So nice to see you here again. Welcome back. I am your host, Habib Ahmed, and in each episode of this podcast, I speak to different guests to get their perspectives on different topics, all around Pakistan or Pakistani culture. Today, we brought back our old discussion squad, who were last featured in our Do Takkay series, episodes 48 and 49. The squad includes Myrah Shafiq, Manahill Shafiq, Hamza Farooq, and myself. We're calling ourselves the Do Takkay squad from now on. Today, instead of focusing on Pakistani dramas, we turn our attention to the 800-pound gorilla taking over the country's entertainment. A Turkish show called Ertugrul or Ertugrul, depending on whether you pronounce the G or not. After Prime Minister Imran Khan famously promoted the show, the government-owned PTV channel started broadcasting Urdu dubbed episodes of the show shortly after. The show has taken the country by storm, garnering extreme popularity with both young and old audiences, boys and girls. And the show follows the story of the man by the same name, Ertugrul, who was the father of Osman I, the founder of the Ottoman Empire. In this discussion, Myrah, Manahil, Hamza, and I discuss our feedback for the show. All four of us have watched it to some extent. We also react to recent incidents and criticisms of the show's exposure in Pakistan. And as usual, we often veer off topic as well to discuss other interesting subjects about our Desi community. And just FYI, lots of switching back and forth between English and Urdu in this one. If you're not up to date on Ertugrul or the latest Pakistani pop culture, this one may not be for you. But if you are, you'll love this one. I am on like episode 23 right now. Like मैंने last week शुरू किया था. मैं पागलों की तरह देखना शुरू, मैं रात को सोने से पहले बस मैं देखना शुरू कर देती हूँ and I don't even realize कब टाइम निकल जाता है. तो 4-5 एपिसोड्स के बाद दिन हो जाता है. मैं कहती हूँ अब सोने का टाइम है, सो जाओ. Yeah, say. I'm on episode 8. You know, I'm still slacking a little bit. I'm still slacking a little bit. मैंने वैसे ही शुरू किया था, Netflix पे देखना शुरू किया था टर्की ज़बान के साथ, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ नीचे. लेकिन फिर वही बात थी, उससे कनेक्शन नहीं आई थी. मतलब टर्की ज़बान सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है वैसे, लेकिन उससे वही कनेक्शन आती है कि जब आप उर्दू आप सुनते हैं तो फिर आप ज़्यादा कनेक्ट you're able to connect more with the characters and everything. So I think that's why I enjoyed it more on PTV and everything. So it's good. The show is great. Mm-hmm. Yeah, a lot of people have told me that they prefer the Urdu version because they can actually connect to it. So that's true. लेकिन मैंने शुरू से ही Turkish में शुरू की. I started watching with subtitles, so I tried watching the Urdu version, but I couldn't make myself do it. I guess once you get used to the voices of the characters, right? वो फिर आप आदी हो जाते हैं तो फिर वापस नहीं जाया जाता. और मुझे पहले भी आता था. I've been a weeb in the past, so I used to watch anime and this, Japanese, Korean stuff, and so I'm pretty used to international content, watching it with English subtitles. I'm also into them now. I don't know what is it, but Netflix just introduced a new category of Japanese anime movies, and I'm like, कितनी अच्छी हैं, wow, so detailed. Exactly. Wow. And I find them very, very interesting. I find them that there's always a lesson there. It's very good for the kids. I find them very entertaining. Yeah, I agree. International content in general is very good. After a while, you get tired of यहाँ पे सारा कुछ American content ही होता है. सारा focus ही American पे होता है, right? So sometimes you just want to expose yourself to different things. I think Hamza's pretty aware of this.
यस या यहाँ पे तो सब चीजें इट्स ऑल यूएस कंटेंट एंड और कोई बाहर की चीजें लाते भी नहीं है, मतलब दैट्स द ओनली थिंग। यहाँ पे सब लोग अपने एक बबल में घुसे हुए हैं। So I am on episode 42. मैं तो बहुत ही पीछे है, मैं तो एपिसोड 7 भी खत्म करने वाला हूँ। So I for your show I just watched 5 episodes today. बहुत fast forward में. नहीं, I think the first season has been really good. Yeah, it ends pretty well too. I'm not going to spoil anything, but I think it's really well done. Actually, very good. I'm waiting for Ertugrul to marry Halima. बस I'm just waiting for that. कर लो शादी भाई. यार इनकी सेटिंग करा दो कोई, पता नहीं कितनी देर से घूम रहे हैं। उनकी सेटिंग हुई भी है, वो बहुत कैजुअली आपस में फ्लर्ट कर रहे हैं और मैं बैठ के यूं देख रही थी कि यार ये मतलब हेलो एक्सक्यूज मी व्हाट्स गोइंग ऑन, ये लाइक दिस इज लाइक वे एडवांस फॉर दैट टाइम पीरियड, बट दे आर लाइक कैजुअली फ्लर्टिंग, यू नो, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जाएं, मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए, एंड आई एम लाइक ओके, होल्डिंग हैंड्स, वेरी नाइस, कूल. Yeah, no, right. Yeah, टर्किश लोग वैसे भी काफी एडवांस्ड होते हैं कंपेयर टू अस पाकिस्तानीज फ्रॉम अ जनरल स्टैंडपॉइंट. Yeah, और ये पुराना ज़माना दिखाया हुआ है, लेकिन आई गेस इवन पुराने ज़माने में भी obviously they had to make the show a little bit entertaining, तो उन्होंने रोमांस वगैरह थोड़ा डालना ही था, otherwise it's hard to capture वो तो हर interest. शो में डालना लाजमी होता है ना, एक तो लव स्टोरी चलती रहती है ना, that's like every single show, no matter what, where the show is originated in, so always a love story just to keep the audience entertained. Yeah, I think every generation had this thing के जहाँ पे लड़का लड़की एक दूसरे से बात करते हैं. I think every generation, even my mother tells me stories and I'm like, आपके ज़माने में what? How is it even possible? And मेरी दादी, चलो मामा छोड़े, मेरी दादी is like, दादा का बताती है, and she's like, हम तो तिब्बत स्नो लगाते थे तो हमारे दादा आके हमें खिड़की पे देखते थे. I was like, what? तिब्बत स्नो? Yeah, it's so weird to think about that, right? I cannot even think about it. But then I look at them and then I say, because of you people, we are like this. Yeah. No, I think the show is very good. It gives us a very good idea of what it was actually like before the Ottoman Empire. Sultanate Osmaniyat, जो अर्तुगरुल का जो उस्मान का जो बाप है ना, वो अर्तुगरुल, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी इसके बारे में. Yes. तो सल्तनत उस्मानियत से पहले थोड़ी आपको पता चलती है. तो ये पाकिस्तानी स्टैंड पॉइंट अगर हम इसको देखें, as Muslims we get to learn about Islamic history. हमें तो मुगल हिस्ट्री तो खैर पता ही है कि हमारे एंसेस्ट्री जो है वो मुगल हिस्ट्री तक ही जाती है, लेकिन बट यू गेट टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, और क्या क्या होता था, किस तरह मुसलमानों ने मतलब अपनी रियासतें बनाई हैं. So it's good to actually learn about that. But the interesting I noticed was like interesting thing ये है इसमें कि 2017 में ये शो आता था सितारा हम पे, लेकिन उस पर कोई देख नहीं रहा था, उस पर किसी ने ढंडोरा नहीं पीटा कि शो आ रहा है, अर्तुगरुल आ रहा है. लेकिन it just goes to show how big of an influencer Imran Khan is, right? Because Imran Khan ने कह दिया कि आप ये देखें, आपको इस्लामी अखबार पता चलेगा, सबने देखना शुरू कर दिया. Yeah, that's so amazing, right? Yeah. और काफ़ी लोगों ने क्यूरियोसिटी की वजह से देखना शुरू किया, लाइक इवन माई सेल्फ एक्चुअली. मेरे भाई, दूसरे भाई, not the one who binge watched 200, he's been watching the show for several years now. He was telling us about this like 3 years ago कि यार ये टर्किश शो है, बहुत अच्छी है, you guys should watch it. तो मैंने क्या, अच्छा चलो मैं नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ. मैंने देखा उधर 70 एपिसोड, 100 एपिसोड की एक सीजन, 100 एपिसोड की एक और सीजन. मैंने कहा यार ये तो लंबा ही चक्कर है. मैंने कभी शुरू में जब मैंने देखा, मैंने कहा 76 एपिसोड में भुखला गया. मैंने कहा एक शो के तो कभी 76 एपिसोड होते भी नहीं है, मतलब कौन देखेगा इसको बैठ के. लेकिन जब मैंने शुरू किया, फिर उसकी स्टोरी में बंदा इन्वॉल्व हो जाता है, as you do with every single show, then you kind of just get into it, and it's interesting. But I will tell you guys one thing though. मैं और मेरी wife, we've been starting several shows actually. We started with other shows. I mean even if I'm really into them, हमारी लिमिट होती है 1 या 2 एपिसोड रोज के देखेंगे हम. So I couldn't even imagine watching a show with 70 episodes in the first season, 76 episodes. लेकिन इसमें इतनी इंटरेस्ट मुझे पैदा हुई कि मैं तो वैसे ही चेकआउट कर रहा था कि यार अच्छी है कि नहीं, maybe I'll just check out a few episodes just to be able to know what it's about. लेकिन then I got genuinely interested in it. Like the storyline was so good, or the characters were so interesting that I've been watching it over the last month or so, and I just finished the first season, and I'm honestly very very impressed by how it's done. और दूसरी बात ये कि this is the first show जिसने एक Islamic context में ना, like kind of something that's closer to our culture but not exactly like Pakistani culture, right? But in that Islamic context, they pulled off something that's very very interesting and very very well developed. Like they put some proper budgeting in place. They made some really cool looking settings, और उन्होंने पूरा और फिर उसके साथ उन्होंने ऐसा मिक्सचर किया, जब कोई आता है सलाम अलैकुम बोलता है, कोई somebody dies, they're doing janaza for him, they're praying namaz and everything. So that's very very impressive to me कि उन्होंने they've done something that's very typically entertaining for Western audiences, but they've mixed it with Islamic culture, and to me
I've never seen that in any other show before. Right. I think what's attracting the people most is that, like, since 9/11 or so, Muslims have been targeted, and media have been targeting us and putting us in a very black light all the time. So this is some positivity that we are getting out of it in international media or something. Maybe that is why we are very much like, chalo shukar hai, something nice about us. Yeah, I think generally because there is such a lack of representations for Muslims that even the slightest representation just feels very overwhelming to us. And given that it's given us so much, the kind of representation that Pakistanis want, it just hit the right spots with Pakistanis. Right, बिल्कुल सही बात है. I think the other thing that's noted here is like Pakistan और Turkey के बीच में जो एक friendship और एक दोस्ती इतने अच्छे ताल्लुक आते हैं, right? So I think that plays a big role into as well. Like because अभी कितने अर्से की पहले खबर है कि 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि टर्किश और पाकिस्तान ड्यूल सिटीजनशिप करने वाले हैं एक दूसरे मुल्कों के साथ. I did hear that as well. So it was like the starting of this year, and Pakistaniयों को अब क्या नाम है for 5 years or so visa भी नहीं चाहिए to go to Turkey. So that's like wow. No, Pakistanis are getting visa free entry, like entry पे आपको visa मिल रहा है. That is the coolest thing. बिकॉज हमारा पासपोर्ट लाइक इंटरनेशनल लेवल पे या पूरे वर्ल्ड के पासपोर्ट्स पे देखा है तो हमारा पासपोर्ट अफगानिस्तान से 2-3 नंबर ही आ गया कहीं पे. लेकिन इफ वी आर गेटिंग दैट, सो दैट आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग बिकॉज टर्की इज़ अ हब ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर. You get to see both of the things over there, and I think everything you get a little bit taste of Western culture, and or you also get the simplicity of Islamic culture and everything, and you get the best of both worlds. And I think if our people can learn something from Turkish people, it would be a very good thing, because in my opinion, Turkish Muslims are the best Muslims. But I have seen they practice everything so perfectly. So if our people can get to learn something from them, I will be more than happy. But on the other hand, I'm also afraid that हमारी नाक कट जाएगी because हमारे लोग वहाँ जाके गन बचाएंगे. यही मुझे भी डर लगता है. यही मुझे भी डर लगता है कि सारे लोग वहीं चले जाएंगे, पाकिस्तान में कोई रहेगा ही नहीं. ये भी बड़ा मसला है. Not only that, but हमारे लोग जिस तरह की हमारी एटीट्यूड्स होती है ना, like judgmental type, already you started seeing कि हम कैसे उनको हमारे लोग कैसे उनको फॉलो कर रहे हैं, their stars on the show Ertugrul, and then how they're kind of harassing them based on things that they're doing or the normal life that they're living. So Turkey, I mean, I don't know much about Turkey in general. मुझे Turkish lifestyle के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन for the most part the impression that I get from them is they're very kind of moderate in nature, right? वो मुसलमान हैं, लेकिन at the same time it's a secular country. Abhi, you know what? They have a very different mentality, because I have a very huge circle with Turkish people. Now, very, very nice people. So when I sit with them, when I talk to them, they have a very different perspective of Islam. They have a very, not different, I will say just a very clear perspective of Islam. They have a very clear perspective of their identity in Germany and in Turkey, and they take the both worlds along with them. And they don't lose anything. Yep. And the kids are so well behaved and well mannered. I don't understand how they do it. And at the same time, the women and the men put their effort extra. कि वो मस्जिद में जाके they do engage themselves in Islamic activities and all that. And that too, not on extreme level. हाँ नहीं, वो मॉडरेट तो खैर वो काफी मॉडरेट है वो, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक काफी सेकुलर भी हैं वो. मेरे ख्याल से वो दीन और दुनिया को साथ लेके चलते हैं. हमारे लोगों को बात में समझ नहीं आती, वो समझ रहे हैं हमारे लोग जो है ना फैक्ट और फिक्शन को असल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. तो वो समझ रहे हैं कि जिस तरह ये शो में है ना उस तरह वो असल लाइफ में होंगे. अब उनके इंस्टाग्राम पे जाके उन्होंने हमला कर दिया कि भाई आपने किस तरह कपड़े पहने हुए हैं, आप इस तरह ये क्यों कर रही हैं, वो क्यों. हमारी मायरा खान जो है वो कौन सी कहाँ पे, वो अमेरिका में पैदा हुई है. So जो वो जिस तरह की ड्रेसिंग करती है, so why can't a person living in Turkey do that kind of dressing? मुझे समझ नहीं आती. बस हमारे लोगों की मेंटालिटी यही है ना कि बस वो अभी हम अपने एक बबल में रहते हैं, तो वो समझते हैं सारे मुसलमान भी जो होंगे ना पूरी दुनिया में वो भी इसी तरह ही होंगे. लेकिन बात दफा इस तरह नहीं होता. हर मुल्क के अपना कल्चर होता है, अपना एक तरीका होता है मजहब और दुनिया को बैलेंस करने का. हमारा तरीका थोड़ा डिफरेंट है. All over the world, media does not represent any religion. हाँ, एग्जैक्टली. I personally think that सोशल मीडिया में के ऊपर जो लड़के हैं ना पाकिस्तान के अंदर, उनका कोई सीन नहीं है. दे आर लिटरली देयर टू हरास विमेन एंड प्रीच. मुझे ऐसा लगता है वो सारे अभी क्या नाम है काबा से बाहर निकले हैं और वो सबसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं और हम सारे सबसे बुरे मुसलमान हैं. हम सारे काफिर बैठे हैं यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, तो आप तो काफिर ही हो गए होंगे. ये मेंटालिटी होती है. Oh please, you know what, one day I had a whole argument with a very close friend of mine because she is of the belief कि people who
live in Western countries वो हराम करते हैं क्योंकि वो हराम कंट्री में रह रहे हैं, तो उन्हें चाहिए वो जाके सऊदी अरब में रहे. मैंने कहा अच्छा, मतलब सऊदी अरब तो जैसे treats us very nicely ना, doesn't even give us like nationality whatsoever, and they're like नहीं नहीं, आपको जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दुनिया दी है तो आप ऐसी जगह पे जाए जहाँ आप क्या नाम है आपके साथ ज्यादती नहीं होती, तो अगर आपके साथ रेसिज्म वहाँ पे होता है तो you deserve it. Like, what is this? उसने फतवा जारी कर दिया हम पे. हम तो फौरन आ जाते हैं हर किसी के कलमे चेक करने के, अच्छा आप ये करते हैं, आप ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, सब आ जाते हैं फौरन अपने फतवा जारी करने के लिए. खुद अपने आप के अंदर कोई नहीं, अपने आप के अंदर कोई नहीं देख रहा है कौन सी बुराई है, लेकिन बस अपने सब पे आ जाओ कि हाँ इसके कलमे चेक करना, अच्छा आप ये नहीं कर रहे. ऑनेस्टली ये वो वाला मुल्क है जो इतना क्रेजी हो गया अर्तुगरुल इसलिए देख रहा है क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक वैल्यूज चाहिए से. बट हाउ अनफॉर्चुनेट इज इट कि एवरी डे यू वेक अप, यू रीड द न्यूज़पेपर, यू रीड द न्यूज़ आर्टिकल्स ऑनलाइन, एंड उनमें इतने ज़्यादा असॉल्ट केसेस हैं आजकल ऑफ माइनर्स दैट यू आर जस्ट अम्यूज कि ये वो लोग हैं जो जाके कह रहे हैं हलीमा बे आप क्या नाम है, हमारी क्या नाम है बहुत बाइज्जत खातून है, आप प्लीज़ अच्छे कपड़े पहने, एंड देन दीज आर द पीपल हु आर डूइंग दिस behind closed doors. Our people just preach Islam as if they know everything. Now, Quran, I don't think so that anybody in Pakistan knows how to read Quran with tarjuma. They all just read Arabic. They don't even know what they're reading. हाँ एग्जैक्टली, वो मतलब उसके कुछ उर्दू के तर्जुमे हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को जो लॉजिक है कुरान की वो थोड़ी समझ नहीं आती होगी. मतलब हर बंदे का इसमें अपना पर्सपेक्टिव भी होता है ऑब्वियसली, वो किस तरह कुरान को समझता है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में. आई थिंक दैट्स यू लीव दैट्स एवरीबॉडी एल्स बिकॉज़ एट द एंड इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. लेकिन हाँ, लेकिन सही बात, लेकिन तर्जुमे के साथ कोई पढ़ता ही नहीं है. कोई भी नहीं. हमारे मौलवी कहीं पे भी नहीं पढ़ाते, हमने खुद नहीं पढ़ा. मैंने अब आके आई थिंक लास्ट 3 या 4 years में आई स्टार्टेड इट विद तर्जुमा अपने ओन पे. हमारे मुल्क में ये कल्चर नहीं है. नहीं, इट्स वेरी ट्रू, you're right, it's very true. मुझे याद है ये 2 साल पहले शायद रमज़ान के टाइम पे, राइट, मेरी अम्मी मेरी एक आंटी के साथ बात करी थी, वो पाकिस्तान में रहती है आंटी. तो आंटी ऐसे बात करी थी कि ये देखो ना, मैं लोगों के घर गई हूँ, इस घर में उन्होंने कुरान मजीद सिर्फ 2 बार ख़त्म किया है, इस घर में उन्होंने कुरान मजीद सिर्फ 3 बार ख़त्म किया है, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह 6 बार ख़त्म किया है इस रमज़ान के महीने में. एंड आई एम लाइक यार 6 बार चलो ठीक है, स्पीड कॉन्टेस्ट आपने बना लिया है और 6 बार ख़त्म कर लिया आपके बच्चों ने, लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ा कि नहीं? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में वाकई दैट्स ट्रू. आई वेंट टू पाकिस्तान एंड आई फिनिश्ड माय कुरान ओवर देयर एक्चुअली. उधर अम्मी ने हाफिज साहब मेरे लिए लगाए हुए थे फॉर द 2-3 month समर ब्रेक दैट वाज आई वाज इन पाकिस्तान. एंड दैट हाफिज साहब ही मेड मी सो फास्ट. मैं शुरू में आया तो मैं इतना स्लो पढ़ता था कि बच्चे मुझ पर हंसते थे. एंड देन बाय द एंड ऑफ दैट समर आई गॉट सो फास्ट दैट आई वाज वेरी प्राउड. आई वाज लाइक यार इतनी तेज़ी से पढ़ लेता हूँ. लेकिन तब मैं 10 सालों की उम्र का था. And then later on in life, I started, asking these types of questions. कि यार हम speed पे क्यों focus करते हैं? Why do we focus on just being able to kind of perfect our Arabic without even knowing what we are talking about? हम नमाज रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज का हमें मैना भी पता है कि हम बोल क्या रहे हैं. काफ़ी लोगों को नहीं पता. And then I would say that to Ammi would be like, well, it's your personal responsibility कि हर बंदे को पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे तो पता है. I'm like, yeah, वो बात ठीक है आपकी, सही है, लेकिन सिखाना भी ऐसे ही चाहिए ना. I don't know about USA because I've never been there, but what I have seen here since last 4 years in Germany is that in masjids or wherever they teach their kids Islam is that they always start with Arabi and Tarjuma together. They do it all together. So like my husband also, he in namaz ke baad bhi, like alhamdulillah ke baad bhi, I never remember him offering reciting the same ayat again. Like it's never kul huwallah, it's always something else, and I don't even know that. Like मैंने नहीं की हुई, but they know everything because उनकी practice होती है, and they also know कि इसका मतलब क्या है. You can just ask them, anybody, like little बच्चे से, they know what they're talking about. दूसरा मसला ये भी है कि हमारे जो माइंडसेट है ना, हम काफी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है. मतलब ये हमारे साथ बड़ा मसला है इस चीज के ऊपर कि we're very extreme, कि हम समझते हैं कि बाहर के लोग सारे गंदे ही होंगे. मतलब इस तरह नहीं होता. लाइक इफ यू लुक, अगर मिसाल के तौर पे अगर हम अरबी कल्चर को देख लें, अरबी कल्चर में मतलब बहुत होता है, नाच गाना होता है, बहुत बहुत पार्टी करते हैं अरबी लोग जो होते हैं. तो ऊपर से फिर हम कहते हैं कि हम उनके ऊपर उनको फॉलो करते रहते हैं कि ये बड़े अच्छे मुसलमान होंगे, लेकिन उनका भी कल्चर है एक जो सेपरेट है इस्लाम से. बहुत बहुत सेपरेट है. I think religion and culture should never be mixed together. I don't want to stereotype or anything. Honestly saying, मैं पाकिस्तान में कभी नहीं छेड़ी हूँ, but like यहाँ पे आके जितने भी लड़कों ने मुझे छेड़ा है ना, वो आधे से ज्यादा अरबी होते हैं, क्योंकि मुझे पास से कह के गुजर जाते हैं माशाल्लाह, because I wear a hijab and they're like, oh माशाल्लाह. So And they're Arabic, huh? Interesting. उनका भी कोई इतना अच्छा है. अगर हम कहना कि सऊदी अरब और all these Arab ममालिक, they have like this whole
think जहाँ पे इस्लाम इनका ज़्यादा अच्छा है, तो that's not the case. They all have their own flaws going on, and उनका कोई system बहुत perfect system नहीं है in terms of growing up or whatever. The problem is that lots of people, they are so pressed, they are so like pressure cooker, they have so much pressure that when they actually get the freedom, they don't know how to use it, and mostly they use it in a wrong way. Yeah, I completely agree with Myra's point there. ये थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि इतने सारे लोग जो इंटरनेट पे आ जाते हैं, they're like harassing girls mostly on Instagram. That's also part of the problem, I think. A lot of our people are not ready to have the internet. लेकिन उनको मिल गया. Yeah, I was saying, adding up to that, these are the people जिनको फिर मुल्लास जिस side पे भी लगा देते हैं ना, they just go into that. And the point is कि Ertugrul is not just completely the right history of ours, right? There's a lot of creation and myth making in it. And then these people really would think कि यही होता था पहले. उनकी कोई research नहीं होगी. वो कहेंगे ये जो हमें दिखा रहे हैं, ये जो हो रहा है, ये बस वो brain wash हो ही जाएंगे, और उनके हिसाब से इस्लामिक हिस्ट्री भी यही होगी. और इसी तरह के लोग हैं जो उनको कुछ भी बता देते हैं, ये लोग चल पड़ते हैं. जैसे अभी पिछले दिनों कोरोना के बारे में मौलाओं ने कह दिया कि हाँ जी हम नमाज पढ़ेंगे इकट्ठे होके, तो बस बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर कोरोना. मैं यहाँ फंसी बैठी हुई हूँ. आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर स्टक इन सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे कैन नॉट ट्रैवल बैक टू देयर कंट्री जस्ट बिकॉज पीपल इनिशियली डिडंट वांट टू अंडरस्टैंड. उनको नमाजें पढ़नी थी साथ. मैंने कहा इन्होंने कभी नमाजें नहीं पढ़ी होंगी, बस इन्हें अब पढ़नी है नमाज. So let's move on to the thoughts on the comments and some criticism from our entertainment industry, the Pakistani entertainment industry, regarding the show. तो जबरान नासिर ने कुछ बोला था कि आइडेंटिटी क्राइसिस चलता रहता है, और फिर मेरे ख्याल से कोई और भी एक्टर था, कौन क्या नाम था उसका? शान ने भी, यासिर हुसैन and then Shan. यासिर हुसैन ने भी कुछ बोला. यासिर हुसैन ने भी कुछ बोला. So what's the thought on the comments? आज इशरा शाह ने भी बोला है that is Ertugrul only this famous in Pakistan or is it also elsewhere? Which she should know how to use Google Analytics, to be really honest. I cannot with that celebrity. I cannot. Her vibe is very offish at times, you know, and also because she's been so on she is casually very you know, her opinions are pretty against everything. Like she never it comes across as कुछ नहीं पसंद, तो वो बस बैठ के ट्विटर पे rant ही करती रहती है हर वक्त. Never have I ever heard her say good things. Our celebrities are always crying about them being trolled and bullied from people, but they're doing the same with the Turkish actors. Exactly. well, हमारी आवाम का जो मेंटालिटी हो यही है, बस सबके कलमे चेक करना शुरू कर दो और सबके इंस्टाग्राम पे हमला कर दो, बस यही हमारी आवाम यही करती रहती है. शान का what was the problem was I believe that his problem was कि PTV पे क्यों आ रहा है. I think that was his problem कि PTV पे क्यों आ रहा है. तो और किस पे आएगा? मतलब भाई प्राइवेट चैनल, मतलब ये इमरान खान ने कहा है ना, तो इमरान खान ने कहा है, तो इट्स अ गवर्नमेंट थिंग. तो गवर्नमेंट ठीक है, तो मसला ये है कि लोगों को टैक्स देना पड़ता है ना, फिर इसलिए इनको आग लगती है क्योंकि इनका शो तो आ नहीं. I think personally Shan, when he starts criticizing and he starts questioning कि हमारा टैक्स जा रहा है, he is not producing anything, he is not coming into anything. वो कुछ कर नहीं रहा, वो कुछ बना नहीं रहा, तो फिर वो बैठ के क्यों इस तरह कमेंट्स पास करे, first of all. And second of all, his content has been really, over the course of time, his content has been either very patriotic, और उससे पहले वो सिर्फ जंगलात में मूछे लगा के घूमता था. So like what is his problem? They're doing the same exact sentiment. Yeah, मेरा भी यही. मैं actually कल अपनी wife के साथ rant कर रहा था, and my wife doesn't even know who Shan Shahid is. So I literally told her everything about him. I was like, this guy is an excellent example of a great actor. बहुत अच्छा actor है and a very good looking guy. लेकिन उसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ज़ाया कर दी है doing these stupid Punjabi movies. And I showed her one of the movies that he made in like late 2000s, like 2007. और 2007 में यार इतनी बुरी क्वालिटी थी कि मेरा कैमरा जो है 5 साल पहले मेरा जो फ़ोन का कैमरा था वो उससे बेहतर क्वालिटी शूट कर लेगा. इतनी बुरी क्वालिटी की फिल्म है उसमें. वो वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, ओए पोतरिया ओए छड्डा गली, you know, I hate that, man. मौला जट टाइप है ना. और उसी same Maulla साल Jat was way better than all these stupid other Punjabi movies that they have produced. They're like B-grade movies. उसकी क्वालिटी अच्छी थी ना, जो मतलब जो नई वाली आई है हमजा अली बासी के साथ, वो वाली ना. वो वाली तो मैंने देखी नहीं अभी. I don't think it's been released yet. Is it released? वो तो रिलीज ही नहीं हुई ना, उसका छोटी पे रिलीज होना था, बट वो हुई नहीं. नहीं, उसका केस खत्म हो गया है. वो हो रही थी रिलीज, या इट वाज अबाउट टू बी रिलीज, बट फिर वो हुई नहीं. पता नहीं फिर क्यों नहीं हुई. आई थिंक वो बिकॉज कोरोना की वजह से नहीं किया होगा, बिकॉज कितना पैसा डाला उसके अंदर. द पॉइंट इज कि इस बंदे ने खुदा के लिए जिस साल बनाई थी उसी साल में इसने what was that movie? Potra Shahid. I mentioned that. Yes. Oh my God. That same year he did that movie. So oh my God. yeah, Potra Shahid. It's on YouTube.
Yeah, 2007 May. Let me count how many movies he's done here. He's done a lot of movies. He's done 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 movies in 2007 alone. Or almost all of them are in Punjabi. And still he whines about Ertugrul. Yeah. No, my problem is with him is that you had your time, you had your opportunity, you had resources, you had everything. You wasted it. Why are you crying now? But did you guys see what happened after that? He deleted his tweets, right? He deleted his tweets and then because he he watched it on Netflix. Yeah. Then he watched it and he said it's a good show. I think he was getting paid. मुझे तो शक हो गया. He got paid or something. No, I personally think कि he was too quick to judge it based on he didn't watch the content. He just was looking at the fact कि जैसे Indian media कहता है कि पाकिस्तानी artist को क्यों काम दे रहे हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा. तो similarly Shan was the same. He went like हमारा काम चला जाएगा, आपने international artist को काम दे दिया, and then he realized कि नहीं content तो अच्छा है तो चलो accept कर लेते हैं. How can he, such a man of such an age, a man of such stardom and everything, I would say, can actually write all this shit down and then just reverse back? ठीक है, अगर आपको अच्छा लग भी गया तो अपना मुंह बंद रख लो फिर. Because there is no accountability and our people will still treat him the same way because our people just have a habit of forgetting. But there was this one person. But nobody respects him. Yeah, but there's one person who had written कि sir, I was literally rooting for whatever you were saying and आपकी वजह से I had not watched Ertugrul and now is this not a U-turn? Question mark. No, but I don't think so that any of us, like we are like in Pakistan 65% youth now. I don't think anybody in the youth actually respects him. Shan? Yeah, but why would you? He just said कि आपको पैसे मिलते हैं वजू करने के लिए और मैं कह रही थी आपको पैसे मिलते हैं खेत में मूछे लगाने के लिए. What's the difference, dude? इनकी जो insecurities है ना, insecurities इनकी बाहर आ जाती हैं सब में. मसला ये होता है ना कि अगर उन्होंने ये देख लिया कि सारी कौम जो है वो अर्तुगरुल पे लगी हुई है, ठीक है ना, तो फिर ये कह रहे हैं हम किस तरह इसको फॉलो अप करेंगे, हम कौन सा ऐसा ड्रामा बनाएंगे जिसपे ये अर्तुगरुल के साथ कम्पीट कर सके. बनाया था ना एक मनाइल, कौन सा था वो? It was called Moor Mahal. We tried making something after Myrah Sultan and Critcisim Sultan के बाद हमने Moor Mahal बनाया था with I think Yasir Jaswal नाम है उसका, I guess, and with Myrah Shafiq and everybody. It was a big ensemble and बहुत mighty crew and cast Jio पे आ रहा था and I don't think वो चला ही नहीं. Unfortunately that drama didn't go well. उसका ट्रेलर भी इतना स्टूपिड था कि सारी शूटिंग जो है ना वो गार्डन के अंदर हुई है, गार्डन में 2 दुपट्टे लगा के. अब बजट ही नहीं होगा ना बेचारों के पास. गार्डन के पीछे जो घर था ना वो मतलब नॉर्मल जो आजकल के मॉडर्न घर है वो घर था और गार्डन में बैठा हुआ था वो जो भी बादशाह टाइप था और पीछे गंदे से इतने गंदे से ना 2 दुपट्टे लगाए हुए थे. बजट तो पैसे तो निकालो. बजट तो है ही नहीं ना, मतलब ये मसला है. The only way Pakistan entertainment can make a show like Ertugrul if it's government funded. That's the only way. Because private channel के पास मेरे ख्याल से इतना पैसा होगा नहीं कि वो इतना इस तरह की चीज कर सकें. ठीक है ना. Private channels के पास होगा भी तो they will just keep on making dramas like जैसे वो बना रहे हैं आजकल. मेरे पास तो exactly वो यही ड्रामे बनाते रहेंगे या ये नहीं तो होगा या फिर हमारी अवाम कौन से ड्रामे देख रही है झूठी. अब is anybody watching Amma TV or मैं reviews? नहीं. Dude, you should watch that. Habib, you should watch it. Really? अच्छा. Amma TV और मैं, you guys will laugh so hard because it's a YouTube channel? auntie जो है ना वो no, it's like a YouTube series by Galaxy Lollywood. Okay, yeah. Yeah, and auntie बैठ के पंजाबी में सिर्फ क्या नाम है, she literally critically analyzes the dramas, which is amazing because she actually gives a perfect review of how I feel every time I watch a Pakistani drama. I'm like ये क्या हो रहा है, and auntie literally puts my emotions into words and those two into like some strongly worded. Auntie also was very much against Ertugrul, na? Auntie said कि I don't promote international content. Acha, that I didn't know. She didn't. Lots of people asked her to watch the drama and give her review. She said, I don't watch. I only watch Pakistani dramas. Which is also a good thing. Okay, you're being patriotic. It's your choice. Be patriotic, but like dubbing artist के लिए काम बना, आपकी कंट्री को ही उसके पैसे मिल रहे हैं. ठीक है, टर्किश जो मीडिया उसका बेनिफिट हो रहा है, लेकिन a lot of it is coming to your country as well, and it's just a way of creating mutual relationships internationally. और PTV की रेटिंग्स जो है 20 साल के बाद ऊपर होंगी इतनी जाते मेरा ख्याल. Yeah, business for your national television, come on. National television, हाँ.
Yeah. Private channels are very angry because उनका business तो खराब हो गया ना. Yeah, अगले दिन on Instagram I was finding you might know this drama, लेकिन ये ड्रामे का एक क्लिप लगाया था किसी पेज ने, तो वो ड्रामे में the husband says that his wife is pregnant with his brother. Whoa. What? Yes, और वो पूरी लड़ाई शुरू कर देता है घर में, कि तुम कब से उसके साथ हो वगैरह वगैरह, and the brother is right there, and I was like, यार इतनी stupid किस्म की stories कहाँ से शुरू हो रही हैं? Like I just don't get it. I want to know which drama this is. I'll find it. I saved it on Instagram. If our people like this kind of stuff, let's just suppose that our people like this kind of stuff, now they want to watch it and they want to make it and all that, then why can't you even make anything like Ishq Ke Mamnu? उसमें भी तो ये सब गंदी था ना. So Ishq Ke Mamnu had like a wife cheating on her husband with the husband's nephew. Maybe he was his अच्छा, nephew. ये ड्रामे का नाम है दर्द रुकता नहीं. दर्द रुकता नहीं, okay. And कैसे रुकेगा? What the hell is this name? I don't know why people are creating so much hype about Ertugrul, क्योंकि इश्क ममनू भी सबने देखा था, मेरा सुल्तान भी सबने देखा था, कोई सुल्तान भी सबने देखा था. Nobody said anything at that time. Fariha सबने देखा था. I loved Fariha. फरीहा सबने देखा था. Yes. This actually ties into one of our next questions, which is what can the Pakistani industry learn from this show, right? Can we take inspiration from this show, for example? Yes. मेरा ख्याल ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये शो देख रहे हैं कि हमने एग्जैक्ट एर्तुगरुल की कॉपी बनानी है, या हमें भी लोग चाहिए लाइक घोड़े पे जा रहे हैं, वो तलवारों के साथ लड़ रहे हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट ये है कि ये इस शो की, लाइक हमजा यू काइंड ऑफ मेंशन्ड, it's shown everything that we like to see, all the different types of things that we try to watch in Hollywood, right? But with an Islamic context, like an Islamic setting. Right. लोग आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, जनाजे की नमाज चल रही है, Right. It shows things that you won't see in Hollywood or Bollywood. हम Bollywood में what the things I think that we like the most in Bollywood are similar types of cultural values, like for example family values and stuff, right? And I'm just gonna add another point. I think, since we all of us live in Western countries, we're always like, हम तरसे भी होते हैं कोई एक मूवी बन जाए जिसमें वो मुसलमानों को अच्छा दिखाएं, जिसमें हमारा जो ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो है ना, वो साथ मिलके एक अच्छा सा एक शो बने. And हम तरसते रहते हैं चीजों के लिए, because we obviously हम एक कौम का हिस्सा तो हैं, but obviously at the end, our immediate culture, our immediate Pakistani culture is completely different from Western culture. So we're always looking for that that good balance. Yeah, I agree. What I meant to also add was कि Pakistani content हमारा we shouldn't actually water it down so much कि हमारा सारा सास बहू ही चलता. Actually, there's a lot of great dramas, especially in recent years from Pakistan, right? But most of these stories, ये मैंने पहले भी mention किया हुआ कि most of these stories stay within the household. और आमतौर पे ऐसा होता है कि we don't explore a lot of stories outside the household. Again, I'm not saying कि we need to make a historic epic drama or we need huge budgets. जो लोग exaggerate करते रहते हैं कि हमें यार इतने बड़े budgets चाहिए to make this type of show and stuff. I'm saying we should at least start somewhere. So it's good to take inspiration from the show in that aspect. Like explore different types of storylines at least. Yeah, I agree with you. I'm like, it's not that we don't have good dramas. We have good dramas, but the ratio of good dramas to bad dramas is very less, na? So, for example, the drama Dureshawar or Hamsafar or Serizat or Zindagi Gulzare or the old dramas and 50-50 and all that, they were very nice dramas. But इसमें भी like these dramas do exist, but at the same time dramas like मेरे पास तुम हो, और अभी आजकल आ रहा है कुछ बुशरा अंसारी का अजीब सा ड्रामा, those kind of dramas, जिसमें this guy is constantly in front of his father-in-law, living in his house, humiliating his daughter, and trying to say that all the mullahs think that लिबरलिज्म, औरत का फैशन करना और औरत का पढ़ना उसकी हुकूमत में गुनाह समझा जाता है. So these were his words. और वो लड़की को वो बेड पे बैठा हुआ है, खुद सामने बीवी सामने बैठी है, थप्पड़ मारी जा रहा है. Like पीरो के घर में इतनी मार कुटाई होती है and all that. But like these kind of dramas also exist. So what I'm trying to say is like good dramas do exist. The writers are there, the directors are there, everything is there. You just need to put a little effort. That's it.
They are not willing to put in effort. They are trying to make money. The problem with our industry is they're trying to make money because everything is money making mafia in Pakistan. Be it education, be it religion, be it housing, be it security, be it nutrition or whatever, entertainment. Everything is about money making. So what I feel like is like they just have a story. They don't want to put in a lot of effort in it. They don't want to put a lot of budget in it. Just make it. Just want to produce it so that they can get a little audience. They get a little money out of it. They get to, at the end of the month, they get to pay their finances and all that, and they're happy with it. They don't want a lot of people recognizing them and praising them and all that. And even if somebody criticizes them, like Amma TV or Main, usme this Amma criticizes everything. Not everything. She actually pinpoints the problems in the shows. And there was a drama Jhooti, and she pinpointed some mistakes, which were very valid mistakes. Because I did not watch any episode of that drama because it was worthless to watch it. Why should I waste my 34 or 38 minutes? And the director actually got into a conflict with her. It was a funny debate. It was a very friendly debate. But at the end of the day, he did not accept it that he had made some mistakes. He said, no, everything is fine. So our problem is that we are not honest with our jobs. Yeah. If you can make stupid morning shows, why can't you make a nice drama? Or a movie? Like movies बन रही हैं, अब बन रही हैं, and अब मुझे लगता है कि अब भी जो movies बन रही हैं, they can be a lot better. Why are they making? Because it's not like we are making movies out of nothing. It's not like we have no case to study. We have no frame of reference or something. We have Hollywood, we have Bollywood, we have Bangladeshi cinema better than us. So why can't we learn from them? Take few tips. Go study a little bit, make a course or something, then make something. It's not like that. आजकल तो YouTube पे सब मिल जाता है. There are like small YouTubers making such nice videos. I find Sham Idris की video quality much better than पंजाब नहीं जाऊंगी, जिसमें लाइटें मार के लड़कियों को गोरा किया हुआ था. Yeah, and I remember when Khuda Ke Liye came out in 2007. Everyone dubbed that as the revival of Pakistani cinema. And I'm sure you guys remember. I'm sure you guys remember that. I remember that. उसके अगले साल बाद एक फिल्म भी नहीं बनाई लॉलीवुड ने उसके अगले साल. So I'm like, yeah, where's the revival, you know? खुदा के लिए अच्छी मूवी थी. I do believe कुछ लोगों की एक्टिंग जो थी उसमें, I think it was a little bad. मेरे ख्याल से शाह की तो खैर बहुत अच्छी थी, नसीरुद्दीन शाह की तो खैर बहुत अच्छी थी as a class actor. लेकिन मेरे ख्याल से फवाद खान था उसमें. I think he was just starting off. He wasn't even that big yet. He wasn't that big yet. Yeah. So his acting was, was subpar. I think it could have been much better. But again, it's just like, we only have कि शोएब मंसूर ने सिर्फ एक अच्छी से 2 फिल्में बना दी, लेकिन कोई और भी डायरेक्टर है ना कि मूवीज बनाने आए. It's just अभी वो अली जफर की मूवी आई थी Thief and Trouble. Very nice movie, very nicely produced, very nice colors and everything. कपड़े भी अच्छे थे, costumes. The problem I had was the storyline, which was far away from reality, and the dialogues. इतने stupid, कौन लिखता है इतने stupid jokes? No, it was actually basically a remake of an old movie. मुझे उसका नाम नहीं पता, but ये Pakistani old movie थी, and it was a remake of that. अच्छा, it was a remake, and still they did such a bad job. Yeah, they did. Well, good point. But my so you had to put like absolutely no effort in it. You had the story, you had the basics, but you still decided to make a mess out of it. My problem was totally that we are a normal family, even if we are not a normal family, whichever family we are. Who is wearing such clothes? कौन पहन के घूम रहा है? Yeah, who is wearing it? कहाँ होता है ये? ये कौन सी ऑडियंस है? ये किसके लिए बना रहे हैं ये चीजें? नॉर्मल मुझे याद है. I think if you mix a little bit of culture, different cultures from the world, and show them from the prism of Pakistan, like Turkish drama, I think it would be a superb hit. इंडिया से ले आओ, दूर ना जाओ, इंडिया से ले आओ. वो कौन सी मूवी थी जो हुमायूं सईद में, जिसमें हुमायूं सईद था, एयर फिल्म ने बनाई थी, उसमें फहद मुस्तफा भी था. जवानी फिर नहीं आनी. जवानी फिर नहीं आनी. उसके दो पार्ट्स बने थे ना. That was good. That was a different movie. It wasn't just, it was a comedy movie थी, अच्छी थी. Yeah, but it was a basic copy of No Entry, na? Indian No Entry. उसकी कॉपी बना रही थी. Yeah, I got the Hangover type vibes. Yeah. Yeah, exactly. Hangover type vibes. So it was nothing new. Yeah. हाँ, हमारा भी यही मसला है ना कि हम इंस्पिरेशन का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ एग्जैक्ट नकल बनाने की कोशिश करें, या एग्जैक्ट नकल भी नहीं, कुछ चीज़ें बदल देंगे अपनी तरफ से बड़ी
चाल मारते हैं लाइक हम ये बदल देंगे कि लोगों को पता नहीं लगेगा, लेकिन सब लोग पहचान लेते हैं कि किसकी कॉपी आपने बनाई है। So that's always been a problem with both Lollywood and Bollywood actually. There's so much rip-off. Our Sarmat Khusat made a very nice based on seven episode drama serial called Aakhri Station. Mm-hmm. Yeah. It was a story about 7 women and it was 7 episodes. इतना classic था वो drama. इतनी अच्छी उसकी storytelling थी. It was a masterpiece. It was a masterpiece. If you can make a drama like this, why can't you make a movie like this? वो 7 episodes को आप एक movie में भी तो convert कर सकते हो. चलो ना करो. Drama भी तो अगर 7 episode का बना है तो 20 episodes का भी बन सकता है. You just need to know how to tell a story. मूवी और ड्रामा में बहुत बड़ा फर्क है. वहाँ पे जो कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, वो समझते हैं कि वो मूवी को भी ना ड्रामा की तरह बनाएंगे. तो मूवी का बहुत फर्क होता है कि आपको बहुत डिफरेंट तरह की मूवी बनानी होती है. द फिल्मोग्राफी इज मच डिफरेंट, यू नो, सो यू कैन रियली जस्ट convert a drama into a movie. I mean, that's drama एक चीज है, मूवी अलग चीज है. So there's completely different dynamics that go into both of them. So drama तो अच्छे हैं हमारे. I mean, dramas are actually pretty good. हमारे drama तो इंडिया में बहुत हिट होते हैं. So I mean, the dramas are actually pretty good. हमारे ड्रामा इंडिया में हिट होते हैं क्योंकि इंडिया का खुद का लेवल बहुत लो है. So we are competing with like nothing. So that's why we are good. हाँ, exactly. इंडिया के फिल्में अच्छी हैं लेकिन उनके ड्रामे इतने अच्छे नहीं हैं. हमारे जो हैं फिल्में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं. So even if you look at Indian films ना जो कि 80s और 90s में बनती थी, even they have better storyline. I was gonna say that Pakistan Lollywood 2020 is Bollywood in early 90s and early 2000s. You know, like इतना अजीब content है. Yeah. They had very nice stories like मासूम और वो मतलब मुझे नाम भूल जाते हैं but मैं देखती हूँ तो they were nice and मुझे लगता है these are very nice movies. हमारा एक भी ऐसा बना दे तो it will be a big hit. Yeah. We had Durj coming, but वो ban होगी बेचारी. We had to like obviously उसको digital release करना पड़ा. I don't know why our people are getting so personalized about cinema. Cinema is cinema. Like जब Padman उन्होंने ban की थी पाकिस्तान में, I got very pissed off. I was like why? Yeah, अभी भी सरमत खुसेट की एक मूवी थी और वो भी बैन कर दी. जिंदगी तमाशा बहुत तमाशा बना था. I heard about that. Yeah, right. And what was controversial about that? मुझे तो समझ कि एक religious man को दिखा दिया था कि it was I think in the trailer that the religious man was मतलब there was a rumor about him but the trailer showed that there is a Maulana साहब and उसके अंदर basically एक dialogue था जिसमें एक random बंदा कहता है लगाओ नारा गुस्ताखी का. तो वो उन्होंने कहा कि मतलब obviously गुस्ताखी का नारा लग जाए तो like it's a big thing in Pakistan because the laws surrounding blasphemy are not very clear in Pakistan. Right. So what happens is basically उसमें दिखाया ये था कि कोई भी basically blasphemy laws को question किया जा रहा था उस मूवी में. So एक तरह से उन्होंने बोला कि हमारे जो आपको पता है हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मतलब ये गुस्ताखी वाला नारा वाला डायलॉग भी हटा दें. सब हटा दिया बट यू नो What is his name? जो गालियां निकालता है जिसने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से मूवी होगी रिलीज. खादिम रिजवी. Yeah, that guy has such a vulgar tongue. He actually abuses people in his sermons, and that guy has the audacity to come up and say कि मेरी लाश पर से मूवी रिलीज होगी. Like he thinks he's the करता धरता of Islam. The guy who gives गालियां सरेआम. गालियां like literally गालियां. Dude, this guy is in a wheelchair and he says मैंने फूक मारी और फलाने की किडनी ठीक हो गया. I'm like फूक मार के सामने ठीक कर लो. He's in a wheelchair. आपको तो डॉक्टर होना चाहिए. नहीं, there's another guy. मेरे YouTube पे कभी-कभी फजूल recommendations आती हैं. It's like इस्लाम में झींगा खाना क्यों हराम है? ऐसे इस्लाम में झींगा खाना हराम है ये क्यों? झींगा meaning shrimp. Shrimp, yeah. कुछ लोग कहते हैं वो भी तो है. Yeah, कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं. मेरी बीवी भी कहती है. वो shrimp कहते हैं मकरूह है. Some people, and that's something that's kind of debated actually. मैंने तो उस वीडियो को क्लिक भी नहीं किया. Do not recommend channel click. Yeah, and I think it's one of the different schools of thought in Islam that they think differently. Some say that only fish is halal, and others say that all samundri makhluk halal है आपके लिए. Meaning all species of the ocean. तो octopus भी खाया मैं क्या करूँ? मैंने सुना catfish हराम है. That's what I've heard. Yeah, so we should just sit together now today. podcast के बाद नमाज पढ़ के तौबा. तौबा. No, तो हमने भी बचपन में सुना था कि अंगूर ना एक एक करके नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस तरह जो है ना अल्कोहल बनती है. तो 2 या 3 खाएं. मैं बहुत दिनों तक मैं यही
even though I never believed in this, but then you get a sense of you feel guilty when you're eating one. कहीं ये सही तो नहीं है, because you never read about it, because you're just saying I don't believe in this. But then I actually sat down and read about it. Like bullshit, ये किसने मुझे बताया था? Yeah. Oh my god. Like just like Manahill said, na, that the Ertugrul is not putting it on our faces that Islam. It's very nicely made. Islam is a part of the show, as it's part of my life, as it's part of my everyday life. But it's not. It's not like it's written on every wall of my house. Islam. I have proofs. I have proofs. It's not like that. But these kind of things, na. And are told to us, and then our people say that we have identity crisis. How can we not? अगर अंगूर खाने पे हमें लगे कि हम अल्कोहल खा रहे हैं. हाँ एग्जैक्टली. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब आपको आजकल के जमाने में दीन और दुनिया को साथ लेके चढ़ना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, दीन ओवर दुनिया. I'm like, how are you gonna? I mean, अगर आप एक वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं, how are you gonna do deen over dunya? You know, it's kind of impossible. अगर आप कहीं में भी रह रहे हैं, how are you gonna do deen over dunya? Like, explain that to me. Can you do it in Pakistan? Like, can you believe doing it in Pakistan? Can you wear a burqa and niqab wala burqa and go to IBM and say कि मुझे मैनेजर की जॉब चाहिए? You cannot do that. No. Let's be realistic. Nobody, they will not hire you. Simple as that. Right. Exactly. आजकल तो ये पाकिस्तान में भी काफी हो रहा है कि वो कहते हैं कि अगर आपने बुर्का वगैरह पहना हुआ है तो आप तो काफी बैकवर्ड हैं, और ये हो रहा है पाकिस्तान में, हो रहा है इस तरह की चीज. पाकिस्तान में तो काफी होता है. और पाकिस्तान में आप पहन के जाए ना, जरा ऊंची करें, फिर टखनों से शलवारें और दाढ़ी रखें और जाए, मैं देखती हूँ आपको कोई एग्जीक्यूटिव की जॉब देता है कि नहीं देता है. फॉरेन ऑफिसर बन के दिखा दें. नहीं, आपको बहुत मसला पेश आता है आपको जब आप इस तरह मतलब बहुत कंजर्वेटिव हालात में, अगर आप इवन पाकिस्तान में भी अगर कॉर्पोरेट जॉब के लिए जाएं तो वो आपसे सवाल करना शुरू कर देते हैं कि गोइंग ऑन. Right, exactly. Honestly saying, मैं जब अपनी मीडिया कंपनी में थी तो उन्होंने भी पूछना शुरू कर दिया था कि आपका कोई प्लान है आने का, आपको तो बड़ा मसला होगा. मैंने क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको वो फिर टेक्निकल काम के लिए रख देंगे और आप आगे कभी भी नहीं निकलेंगी. मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी स्वीट. तो even in Pakistan they ask a girl, are you married? Are you engaged? ये have chance of getting married? इस तरह के जाती सवाल क्यों पूछते हैं वो? Like आपका क्या बिजनेस है? Like, yeah, because if a girl gets married, she will leave the job, then they have to find another one. That is actually very. I understand their point of view also, because हमारी लड़कियां ऐसे करती हैं, चलो शादी नहीं हो रही, जॉब कर लेते हैं. And पाकिस्तान में मसला ये है कि you can do any kind of job with any kind of degree. टीचर तो हर कोई बन जाता है ना. ऊपर से वैसे जो रिक्शा चला रहे हैं वो तो वैसे ही पायलट बन जाते हैं हमारे जाली लाइसेंस के साथ. Exactly. So they don't ask. So जो फारिग होते हैं, फिर जैसी उनकी मंगनी होती है, ससुराल वाले कहते हैं बेटा अब तो तुम घर वाले भी कहते हैं बेटा घर में बैठो, घर का काम सीखो एंड ऑल दैट. फिर शादियां हो जाती हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, बस वो कहती हैं अब हमें क्या, हमारा तो खर्चा कोई और पूरा कर रहा है. So I'm not against that. It's good. It's to each to own. You can do that. जो काफी career oriented होती हैं, I've noticed. Yeah, but you should have a little professionalism in you, that if you have started a job, please continue it till the end. Do not make problems for the other people. And the other people should also accommodate the other person. कि शादी हो रही है, ठीक है, you take off, come back. Right, exactly. Yeah. Have a baby, come back. Maternity leave अब जाके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है, वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे. उसका एक सेनेट में शायद एक बिल लॉन्च हुआ है. सेनेट में बिल लॉन्च हुआ था कि मैटरनिटी लीव में कुछ कितने हफ्ते पेड मिलेंगे, कितने महीने पेड मिलेंगे. मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है. ये तो यूएस में तो है ही नहीं मैटरनिटी लीव. What's the law on maternity leave in the US, Habib? There's an unpaid leave policy, right? लेकिन पेड लीव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूएस में. Really? So it varies by company. यूएस में unpaid maternity leave होती है यूएस में. Yeah, it's hard to here believe, you can take like one year off, fully paid paternity leave. उसके बाद if you want to continue, your pay will get half. थोड़ी मतलब परसेंटेज काटते, 10% काटेंगे, फिर कुछ महीनों बाद 20% काटेंगे, इस तरह. और the men can also take 2 months off after the delivery, like as a parental time, and 6 weeks plus if you want to. Yeah, Europe is amazing for work-life balance, I think. यहाँ पे US में मेरे इतने co-workers हैं, इतने दोस्त हैं जो they've been talking about leaving the US and going to Europe because your life to work balance is much better in Europe. They prioritize your life a lot more. Yeah, there you are not allowed to work more than your office hours. Yeah. क्योंकि यूरोप में तो है कल्चर ना, फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है, कुछ इलाकों में है फैमिली ओरिएंटेड कल्चर. यूएस में तो यार बस हर चीज इंडिविजुअलिज्म. Everything is business. Yeah. Everything is business in the US. मतलब वो आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं देखते. मतलब खैर कुछ कंपनीज देखती हैं, लेकिन but just the concept of individualism is just so ingrained in this society. And sometimes it gets really frustrating to actually explain somebody family values, and then because a lot of कट्टर गोरे लोग होते हैं, इनको तो फैमिली वैल्यूज होती भी नहीं है.
They expect you to leave the house. They expect you to leave the house when you turn 18 in the US. Basically, that's the they kick you out of the house. Basically. So I think, but this is a very nice point, na, to say that agar Ertugrul is being aired in Pakistan and we have very nice relationships with Turkey now, maybe it means more job opportunities for our young generation in Turkey. और क्या पता हम दोनों मिलके अपनी currencies का थोड़ा बेहतर हाल कर ले. So instead of going to America, they go to Turkey. Easier to travel, easier to come back, easy to settle down. Yeah. Exactly. Yeah, I think having good relations with Turkey can go a long way. Yeah. पर लेकिन यही है ना कि उसके पर बात आती है कि टर्की से बड़े अच्छे रिलेशन है हमारे, लेकिन हमारी वहां पे जाके उनके कैरेक्टर्स पे जाके जो इंस्टाग्राम उन पे जाके हमला कर दिया. I know Manaz gonna go off on this. हमारी मुझे समझ नहीं आती है. आपको अगर मसला है उससे, आप उसकी पिक्चर खोल के देख रहे हो, फिर उस पे कमेंट के लिए क्लिक करो. How much time you're wasting? You're thinking what to write on it. You actually think she's going to read that? Who are you? हमारे इमाम तो फारिग बैठी हुई है ना मीम्स बनाने के अलावा. To everybody who's listening, if it's a guy or a girl, whoever it is, I have just one question. These are the people who go back and watch all kind of obscene things on their mobile phones, yet they have the audacity to sit and comment. All of these men who are saying, you are Halima Khatun, please stop doing this. You are Muslim, please stop wear clothes. Don't show. All of these people. I have a question. Pakistan में बढ़ते हुए cases about all the abuses, all the child abuses that are happening in terms of house help, in the job sector, on the street harassment बढ़ रही है, लोग पागल हो रहे हैं. मैं समझती हूँ आपकी बहुत ज़्यादा आप frustrated है अपनी life के अंदर. बट ये हिपोक्रेसी का कोई नेक्स्ट लेवल हो चुका है कि आप किसी भी बंदे को मतलब आप नजर झुका लो, हट जाओ वहां से. Like Myrah said, why are you there? Why are you watching her pictures? Why are you on her Instagram if you just cannot tolerate the fact कि यार ये बंदी she has a different, इसका lifestyle different है, इसके set of values are totally different, she's been brought up differently, besides उसका culture is totally different. You do not no, have. But in the end, who are we to decide that somebody is wearing these kind of clothes? So it's a bad Muslim. सबसे अच्छे मुसलमान हम ही हैं भाई, हम ही. हमारा तो इस्लाम जो है वो बस हमारा इस्लाम है, बाकी सबका इस्लाम मजाक है. Besides, these are the people who will not even have a single issue when, like, okay, you can raise questions about people around you and then judge them silently. But should you be the one saying that because you yourself are doing all of these things? Men in Pakistan are really answerable to every woman जिनकी पोस्ट पे जाके वो कहते हैं कि जी हिजाब करें, आईब्रोज नजर आ रही हैं आपकी, तौबा आपकी आईब्रोज नहीं नजर आनी चाहिए. नहीं, और एंड द सेकंड थिंग, एक तो इसका कहते हैं हिजाब करें, एंड द सेकंड थिंग इज जो लड़कियां हिजाब करती हैं, दे आर नॉट ब्यूटीफुल, दैट्स व्हाई दे डू इट. द वंस हु आर डूइंग निकाब, उनका निकाब उतारो ना तो अंदर से पता लगता है क्या होता है. सो दे आर नॉट हैप्पी विद एनीथिंग. एंड पठानों में तो इट्स वेरी, पठानों में नहीं, बट इट वाज ऑन द शो, आई थिंक इट वाज ऑन द शो, इट वाज ऑन टीवी, कि वो पठानों के बारे में तो बता रहे थे कि लड़की बुर्का करती है तो वो लोग कहते हैं कि अगर लड़की देखनी है कि वो कैसी है तो उसके पाँव देख लो. सो मतलब पाँव भी नहीं छोड़ने आपने लड़की. And I'm not saying कि लड़कियां नहीं करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, but the men are doing it on a bigger scale. They are harassing them and they're doing a lot of things. मैं ऐसा नहीं कह रही that all Pakistani men are like that. But to prove my point, as Manahill said, the number of cases are increasing day by day. And I think Habib, I sent you the link of that transgender social activist who was talking about it. So he said that you have, instead of giving books and roti to your generation, to your frustrated generation, you have given them phones. And they have internet, and that phone and internet is the cheapest thing that you can get in Pakistan right now. Cheaper than food also, and medical. So what do you think they are doing on their phones? Yeah, exactly. That's true. Yeah, exactly. They are watching Maulana Tariq Jameel. Yeah. Our phone's equipped with internet, right? They're probably one of the most powerful things that you can and then get. these men look at the women who are wearing jeans on the street and they're like, astaghfirullah, ये भी ऐसी होगी जितना मैंने फोन में देखा. Hypocrisy ना, मतलब hypocrisy बहुत है. सवाल ये है, it's called the naked truth, and उसमें she even said कि आप लोग कहते हैं कि शराब पीना हराम है, कि तो बिकता है पाकिस्तान में, सब बिक रहा है, सब चल रहा है. और कहते हैं ईद पे पार्टीज होती हैं, सुबह आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, शाम को आप पार्टीज पे आते हैं और उसमें किसको डांस कराते हैं, ट्रांसजेंडर्स को, और फिर बाद में कहते हैं ट्रांसजेंडर्स को हम अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते हैं.
क्यों भाई, उनका क्या कसूर है? Like you basically have, मतलब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है ना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की. मैं कह ही नहीं सकती कि जी हमारी बड़ी इक्वालिटी चल रही है, हम प्रोग्रेस कर गए हैं, बिल्कुल भी नहीं. हमारी बहुत बड़ी पेट्रियार्कल सोसाइटी, अभी भी जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो चाहे मर्द है, वो औरत है, वो जैसी भी है, उसके पास थोड़ा पैसा, थोड़ा पावर, जो भी पावर प्ले इतना ज्यादा है कि यू डोंट हैव द राइट जस्टिस सिस्टम और द राइट सिस्टम दैट इज पुट इन प्लेस. So when men like these have such authority to go out around, तो बात सिंपली वही हो जाती है कि एक हिपोक्रेसी इज लाइक नेक्स्ट लेवल है आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर. आप कह नहीं सकते कि यार हिपोक्रेसी नहीं है. आप लोग प्रिटेंड करते हो कि हम लोग बड़ा नमाजें पढ़े हैं, हमें कुरान आता है, हम सपोर्ट नहीं करते. लाइक बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चीजें जो लोग चेंज नहीं करना चाहते, जबकि वो चेंज हो जानी चाहिए बिकॉज दे आर एक्सट्रीमिस्ट लॉज. एंड पहली हिपोक्रेसी एंड दूसरा मतलब एजुकेशन की कमी. I don't think education की कमी is the problem. I think exposure is the problem. Exposure का बड़ा मसला है. I think the They are exposure, getting the wrong exposure at the wrong time. Yeah. exposure का बहुत बड़ा मसला है, but I think the exposure can be improved if you have good education. अब Hamza, the kind of education they are giving in Pakistan, I don't think they will learn anything out of that. क्या पढ़ा रहे हैं? Not like academic education. Education can be so many things. Na? Education is what you learn in home. Education Then that can be taught in home. And for that to be taught in home, the mothers and the fathers have to be reasonable. But they're also doing the same kind of thing. कोई बात आती है ना कि अगर एक पाकिस्तान में एक बच्चा है, वो इंटर करता है, और एक पाकिस्तान में एक बच्चा है जो A level, O level करता है. So which quality of education is better? A level वाली ना. Obviously, because that's obviously Western education, and Western education is valued more. But Imran Khan ने कहा कि March 2021 के ये पूरे education systems जो हैं ये एक हो जाएंगे. जो मदरसे में भी हैं, वो भी उनको दीन भी पढ़ाया जाएगा, दीन भी पढ़ाया, इस्लाम भी पढ़ाया. Obviously, our state religion is Islam, we're a country founded for Muslim people, so we have to teach Islam. That's good. लेकिन आप और चीजें भी पढ़ाएं ताकि उनको दुनिया के बारे में exposure हो, ताकि वो भी society में contribute कर सकें. उर्दू जो मदरसे वाले हैं, जो उर्दू मीडियम वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनका तीनों को एक होना चाहिए. इससे क्या होता है कि तीन डिफरेंट आपने एजुकेशन सिस्टम्स किए हैं और तीन डिफरेंट कल्चर्स पैदा हो रहे हैं. और इंग्लिश मीडियम वालों के साथ उर्दू मीडियम वालों के साथ नहीं बनती. मदरसे वाले कहते हैं ये दोनों काफिर हैं. So ये मसला चल रहा है. That's the thing. So that's the thing. So but like in Ertugrul, these people were not going to schools. They were not doing A levels or O levels or whatever. They were at home. Their mothers and the parents and the X generation before them, they were sticking to their roots. As I said, that Iqbal had a very clear sense of the path that we had to choose for us. We are not on that path. हमारा मसला ये है, हम पता नहीं कौन से पाथ के ऊपर हम जो है ना वो एक टूर कर रहे हैं. एंड आई डोंट नो इफ यू वांट टू कम बैक और नॉट, बट आवर प्रॉब्लम इज दैट अभी यूथ में द फ्यूचर पेरेंट्स दैट वी आर generating are not good enough for the future generation. I don't think they're ready to be parents. Huh? I don't even think they're ready to be parents. They're not even ready. Like for example, if you have a degree in medical or whatever, that does not make you a good person. And to bring a good child in the society, you first of all you have to be a good person. हमारी society में मसला ये है कि majority, not everybody, again not everybody, but majority का मसला ये है कि हम बच्चे होते हैं तो we look at our parents and we say like, oh, they are our heroes and all that. But as soon as you grow up, you go here, there, you look at things, you read about things, you have your own journey, and then you finally realize, oh, your parents did a lot of mistakes. They were not doing everything right. So why were they not doing everything right? That is my question. If they were doing everything wrong, how can anybody expect from the next generation to do everything right? Yeah. जब पहले से मतलब जब रूट ही खराब है तो ट्री कैसे सही निकलेगा? So in Ertugrul, as I said, the mother, जो Ertugrul की माँ थी, she was the reason why Ertugrul was like how he is. और हलीमा सुल्तान के पीछे भी उसकी अम्मा और अब्बा का ही हाथ था. कोई तीसरा कोई टीचर, कोई दोस्त, हमें कुछ नजर नहीं आया. And the friend circle they had was also nice. हमारा friend circle भी खराब है. हमारा खानदान में इतनी backbiting होती है, cousins का मसले होते हैं. फूफी ने कह दिया, खाला ने वो कह दिया, चच्चे ने ये कह दिया. अब्बा का अपना वेस्ट की तरफ मुंह है, अम्मा का नॉर्थ की तरफ मुंह है. कोई मतलब you have to be on the same page to raise a kid. And that is a problem. If मतलब ये तो पहली बात है ना कि बात है कि if you have good mothers, you have a good nation. That's it. True. इसमें तो I will not even bring के इसमें fathers का कोई काम होता है and all that. That is a mother's job. Fathers also play a very big role in it. They should and they must. Right. But the primary role goes to the mother. You have to do that.
एंड आर जनरेशन जो कि एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक अच्छी माँ या एक अच्छा बाप कैसे बनेगा? तो फिर आगे के बच्चे क्या करेंगे? Yeah, like so many women are like unka mindset is so, like disturbingly sick towards women of all sorts. Like अगर आंटियों को ही देख लें तो वो तो मतलब जज इतना शदीद करती है. I mean, I wear jeans with my hijab, right? So like jeans पहनी है तो हिजाब का क्या फायदा है बेटा? And I'm like, हमने तो कुछ भी नहीं किया आंटी, तो फायदा क्या है? They're never happy. Like they have the audacity. Yeah, they're never happy. So like mothers, even I totally agree कि mothers have the primary role, but given a society like Pakistan, उधर तो माँ ही इतना जज कर लेती हैं औरतों को. वो घर से बाहर निकली थी तो उसने दुपट्टा नहीं क्या बताया, फलानी वो तो इतने दुपट्टे में निकलती जरूर अंदर से खराब हो. उनकी जनरेशन जो थी ना वो इसी तरह थी. That's the thing you have to understand. Like 30 साल पहले जो था वो जो हुआ था, that's how Pakistan used to be. तो पाकिस्तान में उनको क्रिटिसाइज भी इसी तरह किया जाता था, तो वो भी इसी तरह क्रिटिसाइज करती हैं आगे वाली जनरेशन को. अब ये है कि अच्छी बात ये है कि अब आजकल लड़कियों को पाकिस्तान में काफी एक्सपोजर मिल रहा है and they're standing up for their rights and which is good. They're standing up for their rights, but ये कि पुरानी वाली औरतें वर extremely superstitious and extremely घरेलू, और आगे आने वाली जो है वो दूसरे एक्सट्रीम पे चली गई हैं. Mostly, not all of them, mostly. We have to keep a balance. I mean, it always comes down to that. And the problem is that we as a nation has failed. कि जब हमारी 65 या 70% इस वक्त population youth है, we as a nation has failed to give them orientation. It's crazy. I mean, they are doing all sorts of things. They do party. They take pride in wearing Western clothes. They take pride in talking in English. They take pride in doing drugs and drinking alcohol, which is very common, let's be honest. And they take pride in making relationships out of, you can make relationships because it's a necessity nowadays. You should know what kind of the other person is, but you should always know where your limits are. And there I would say, instead of Gibran Nasir saying that when we watch Ertugrul, we have identity crisis, I said, no, Miri Jan, identity crisis lies in very different ways in your nation. You just have to come down a little bit, go talk to your youth, you will know. Kitni frustration hai. Abhi Manahill was subah telling me that the students from NUST, one of the prestigious universities of Pakistan, they have done mass comm and they do not have jobs good enough according to their degrees. I am a software engineer, but my university was like इतनी फजूल से कोई university थी ना मेरी, मैं क्योंकि I was not a very bright student and all that. So I just said कहीं पे भी कर दो बस, चलो यार करो. And I never even tried for masters. And in Germany I got such a nice job which is very nicely paid, my first job and everything. In Pakistan, these people are studying from such nice universities. They are paying so much. I didn't even pay that much for my university. And they are not getting jobs. So बच्चा क्या करेगा? वो शादी नहीं कर सकता ना. 30,000 की. That's the issue, yeah. 30,000 की जो उसकी पे है, वो बच्चा कमाते पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा. वो 30s के बाद ही शादी करेगा. 30s के बाद आप एक grown up man से एक लड़की की शादी करा रहे हैं, and then you expect that person to be flexible. It's stupidity. ये बहुत मसला है. I think it's just बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, and they produce great talent and great prospects for future companies. लेकिन मसला सारा यही है कि जॉब्स है ही नहीं. लोग कहाँ जाएंगे? मतलब 2019 में 500,000 लाख लोग जो है पाकिस्तान से बाहर गए. अब मुल्क छोड़ना भी आसान बात नहीं होती, ठीक है ना? I mean, our parents जो आप लोगों ने भी मुल्क छोड़ा है, मेरे अम्मा बड़ी मुल्क छोड़ा था. It's not easy, obviously not. It's not easy to go into. It's a very difficult job. I think it's the saddest thing to do. Exactly. It's the saddest thing to do. लेकिन बंदा क्या करे? I did it because I got married here, so I had to. Manahill was studying, she will go back. But if you're coming just to earn, that is the saddest thing to do. You shouldn't have to. हाँ, exactly. अगर अपने मुल्क में आपको जॉब नहीं मिल सकती, अपने मुल्क में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, लोगों में नहीं मिल सकती, so अपने लोगों में नहीं मिल सकती. You're trying to look for a shelter in another country amongst people you don't know, and the government, and I'm like, kar lo jo karna hai. You all have to, you all are answerable at the end. That why couldn't you just accommodate your own people? कितने लोग हैं? 200 million. 220 million. 200 million लोगों को इतनी बड़ी गवर्नमेंट संभाल नहीं सकी. अब कितने लोग हैं हमारी MNA, MPAs, हर प्रोविंस, हर शहर का, हर इलाके का एक MNA बैठा हुआ है. आप कुछ लोगों को नहीं संभाल सके, उनकी केयर नहीं कर सके.
It's sad when you think about it. और काफी इशू हमारा सोसाइटल भी है, like you know, just thinking through all these different issues we're talking about, right? कि लड़कों की शादी नहीं हो रही क्योंकि वो jobs नहीं ढूंढ सकते, और there's parental issues, for example. हमारे parents, we see a lot of flaws in them, like Myrah kind of mentioned, as we grow up, but then we realize कि यार हम parents बनेंगे तो हम we need to do even better than them, because at least it seems like our parents were somewhat prepared. लेकिन आजकल की generation तो बिल्कुल prepared नहीं है, so there needs to be a sense of maturity. No, they're not prepared. Yeah. They're not prepared. There's a lot of these societal issues, and then regarding this whole population thing, I mean, I've been talking about this, लेकिन इस podcast पे मैंने बात नहीं की इसके बारे में, लेकिन आप ये भी देखेंगे Pakistan has been one of the highest countries in terms of childbirths over time. Right. And that has not matched our economy growth. Economy आपकी चल ही नहीं रही, पैसे है ही नहीं मुल्क में, बच्चों को कौन खिलाएगा? अल्लाह खिलाएगा, you know, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह खिलाएगा ना, अल्लाह ने खिलाना है। It's a basic concept. I have a friend circle, like educated girls and all that, but they believe that if you use protection and all that, it's guna. Like planning a child is a guna. Yeah, a lot of people say ये that. भी चलता रहता है कि the only reason why you engage in sexual relations is to actually procreate. Yeah, ये भी that's what they चलता say. रहता है हमारे यहाँ. And I was told by a friend's mother on my face that you're doing a guna because I planned my kid, and I'm very happy with my choice because I didn't know my husband and I get to spend a lot of time with him. And now the bond that I have with him, nobody in the world can break that, even a child, which a lot of times happens in marriages. जब आपके बंदे को जानते नहीं, बच्चा आ जाता है, माँ पागल हो जाती है. Psychological, physical, कितने changes से वो जाती है, nobody knows about that. So she said it on my face that अल्लाह के काम में बेटा आपने रुकावट डाल के अच्छा नहीं किया, गुनाह है. So I just wanted to say it on her face कि अगर ये अल्लाह का plan होता तो no matter what I do ये हो जाता. Exactly. Allah also did not plan this. Exactly. He I think clearly gave me the choice, na? I think we need to have sex education in Pakistan. It's really Very needed. important. And Yeah, it's हम really बचपन से needed. हर जगह पढ़ते आ रहे हैं. मनाहिल को भी याद होगा because we traveled a lot. हर जगह बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे. हर जगह पे there were these चाबी वाले family planners who were going to the houses, who were telling everybody that why you should have only 2 kids, not more than that. At that time they were trying to control the population. ये बचपन है मेरा, like I'm talking about 20. When I'm 27, and let's just say 20 years back when I was 7, because तब से मुझे याद होगा. हर जगह बोर्ड पे लिखा बच्चे दो ही अच्छे बच्चे. Nobody clearly listened to that, or maybe we are just uneducated that we couldn't read. No, it's not that. It's just that because people in Pakistan, they don't follow. मतलब अगर ऐसी इतना आसान होता कि लोग घर जा जाके बता रहे होते तो पोलियो खत्म हो चुका होता हमारे मुल्क से. मसला सिर्फ ये हमारे लोग सुनते हैं, मुल्ला जो हमारे मौलवी साहब होते हैं ना, वैसे मौलवी साहब बीइंग के जो अच्छे वाले होते हैं वो तो दे worthy of your respect, but I'm talking about the extremist uncles who have no know-how of Islam, and they just like say whatever comes to their mind or whatever suits their perception, and they actually advise you against contraceptives, they advise you against planning, they advise you against even polio and vaccines. They're anti-vaxxers. Half of them are anti-vaxxers, I'm sure. And they don't believe in half of the things that are really good for your society. So they themselves have 8-9 kids of their own. How do you think they will tell their people who follow them, वो जो बैत कर लेते हैं लोगों पे या फिर जो followers हैं, they preach to them कि यार नहीं, this is not good for you. Don't use contraceptives. Do whatever you want to do. Crazy हो जाओ. मतलब हमने पोलियो अभी तक से eradicate नहीं की. Like that just itself is just so embarrassing. पूरी दुनिया ने पोलियो eradicate कर ली, हमने नहीं किया आज तक. अब अच्छा वो लेप्रेसी का क्या था? लेप्रेसी कौन थी जो बंदी आई थी? रुथ फाओ, ठीक है ना? वो भी कोई बाहर से बंदा आया, जर्मनी से बंदी आई थी जिसने लेप्रेसी जो है ना पूरे पाकिस्तान में खत्म कर दी. अपने बंदों ने खत्म नहीं की, बाहर से कोई आता है, बाहर से कोई आते हैं बंदे लेप्रेसी खत्म करने के लिए. Like, oh come on, yeah, it's just like I don't know. I think I've seen this in our people. People की बात नहीं करूंगी. I have personal experiences with some close relatives and all that, but I see it in them that they do have a need to depend on people. वो कर दे मेरा काम, वो करेगा ना ये मेरा काम, इसलिए मैं ही कर दी. Laziness. डिपेंड आपने कैसे खुद कुछ नहीं करना. Laziness तो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में. कराची में दुकानें. And then you also kind of blame the other person also if they don't do it. Which is sad. Like आपकी कंट्री में वॉलंटियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बंदा पोलियो को नहीं, मतलब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपकी ना कंट्री वॉलंटियरिंग के लिए जा रही है, ना कुछ अपने लिए कर रही है, ना किसी के लिए कर रही है.
बस सारा वक्त क्या करो, इजी मनी मिल जाए, और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान सबसे खुश कौम है। मैंने कहा टेंशन जो नहीं है किसी बात की, हो तो रहा है, टेंशन चल नहीं तो रहा है, है। टेंशन नहीं है, क्योंकि सब काम जो है ना वो आराम आराम से होता है। मतलब हो इट्स रहा जो है। जो पेस ऑफ लाइफ है ना वो काफी आहिस्ता है, तो काम टेंशन किस काम चीज की होगी? हाँ, टैक्स देना नहीं है, टैक्स ही या देना है। मेडिकल इंश्योरेंस देना नहीं है, हाँ, या बच्चे मैं की सोच फीस जो है नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम मांग लेंगे पढ़ाओ। इधर उधर से। और ये हाँ, हम बेसिकली हम ये मिडिल क्लास लोगों की बातें कर रहे हैं ना, पीपल हु हैव लाइक शॉप्स एंड बिजनेसेस बेसिकली। नॉट एवरीबॉडी इन पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू दैट, जो खास तौर पे जो हमारे मजदूर हैं, राइट, लेबर टाइप ऑफ पीपल, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है वो ना। तो हाँ, उनकी हाँ, उनकी पढ़ाते उनकी नहीं। उनको तो सोसाइटी तो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है, या तो उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मेडिकल केयर भी हाँ, कोई इतनी जरूरत नहीं होती, बस वो या कहते हैं लक्कड़ हजम पत्थर हजम, चल बेटा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये बात मैं जगह हमजा के साथ भी अभी कर रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले एक्चुअली डीएम पे। और बात यही थी कि मैं जब पाकिस्तान गया था तब मैं स्कूल में था, तो तब मुझे काम वगैरह का इतना मुझे नहीं था कि यार लोग जॉब वगैरह क्या करते हैं, लेकिन फिर भी मैं तब देखता था कि मेरे मामू जाते हैं, घर से निकलते हैं और 5 मिनट बाद वापस फिर आ जाते हैं घर। तो पता लगता था कि वो जॉब वगैरह होती नहीं आजकल, बिजनेस बिजनेस घर से ही चला रहे हैं। कभी कभी जाके चेक कर लिया ऑफिस पे क्या चल रहा है, अच्छा सब कुछ ठीक है, चलो वापस आ गए, आम की पेटी लेके घर आ गए, सारों को आम खिलाया, खुद आम खाया, सो गए, यू नो। और हाँ, कभी कभी मैं So कैंटीन लेके जाता था, आई यूज्ड टू टेक टिफ़िन लेके जाता था अपने मामू को देने के लिए लंच। वो मेरी मामी बना के देती थी, Okay. तो टिफ़िन लेके जाता हूँ, वो दुकान पे वो सोए हुए हैं, उठे हैं, तो उनको टिफ़िन दिया, वो खाना खाना शुरू कर दिया, रोटी खाना शुरू कर दिया, दुकान 2-3 घंटे के लिए बंद पड़ी हुई है। तो इस अब मैं सोचता हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो वाकई जिस तरह आप लोगों ने मेंशन किया कि पाकिस्तान से जब यहाँ लोग आते हैं वेस्ट में काम करने के लिए, तो उनका जो माइंडसेट होता है कि वेस्ट कैसा होगा, कि यार ऐसे ऐसे दरख्त से पैसे उतरते नजर आएंगे, मैं पकड़ लूंगा और एवरीथिंग विल बी फाइन। इट्स एक्चुअली नॉट दैट वे। लोग समझते हैं कि अमेरिका में काम नहीं होता, यहाँ पे काम कुत्तों की तरह आपको काम कराते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे घंटे लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं, कोई नैप ब्रेक नहीं मिलती, कोई आपको लंच ब्रेक हाँ, टाइम होती है exactly. आपकी। Everything is timed, everything is on a schedule here, and it's honestly that is why Yeah. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके घर में नौकर भी नहीं होते। हाँ, नौकर भी नहीं होता है। I've actually had some people complain to me about that, like especially Indians, because they also have the nokar concept, right? Or but if you think about it, this is why depression and anxiety especially is such a big problem in countries where you think they should not be. Just because people are financially well off doesn't mean that their life doesn't, that they're not feeling Yeah. suffocated. यहाँ पे सुकून नहीं है, Yeah. और पाकिस्तान में अलग सुकून है ही नहीं। अल्लाह का शुक्र You're है। right. हो सकता है अल्लाह की नेमत होगी कि पाकिस्तान में I've seen a lot of people, not everybody, but a lot of people have सुकून at least in their lives. They have nice homes, they have servants, आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रांग फैमिली सिस्टम, दैट्स व्हाई। या फैमिली सिस्टम। और मैं हबीब से ये बात करता डीएम के ऊपर कि हमेशा मैं कहता हूँ, और जो भी लोग सुन रहे हैं उसको गौर से बात सुन लें, अगर आप पाकिस्तान में फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं एंड यू आर लिविंग द लाइफ इन पाकिस्तान, देयर इज नो नीड फॉर यू टू कम, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो एनीवेयर, exactly. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गो Yeah. अब्रॉड, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर I tell my mother, I say, Mama, you are living like a queen. Please complain ना किया करें, आपके मुंह से मुझे अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है मुझे। You're living like a queen. You're living like a queen. आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितना आपको मतलब रुला के रख देंगे आपको काम करके। यूएस में तो यही है, that's the US lifestyle। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे ना आपकी कोई, जब आप शुरू में आएंगे पाकिस्तान से, तो ना यहाँ आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, लेकिन आपने 20-25 घंटे आपने काम करने हैं दिन में। कुछ लोगों में जानता भी जिन्होंने इतने घंटे लगाए हैं दिन में, 20-25 घंटे काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर 20 साल जाके ऐसा मसला होता ही है कि जैसे मैं अभी को बता था कि यहाँ पे लोग आते हैं अपनी फैमिलीज को देखने, तो वो देखते हैं कि हाँ यार इनकी तो बड़ी अच्छी लाइफ है, इनके तो बड़े अच्छे घर हैं, 3 बेडरूम 4 बेडरूम हाउस, गाड़ी भी अच्छी चला रही है वो, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट है। वो फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, ठीक है ना। वो जो बंदे ने 20 साल 25 साल मेहनत की है ना, वो स्ट्रगल का फेज जो है ना, जो स्ट्रगल का फेज का बात कर रहा था, वो आपने नहीं देखा, आपने सिर्फ सक्सेस का फेज देखा है, ठीक है ना। सो you don't know what it's like to actually struggle in the US, or struggle just about anywhere you go abroad, you don't know what's like to struggle there। कितने घंटे लगाने पड़ते हैं, 20-25 साल लगाएंगे, फिर पहुंचेंगे आप जाके। Especially first generation immigrants, जो पहले आते हैं ना यहाँ पे अपने बच्चों को लेके, those guys have to work really really hard. Exactly. वो गाड़ी Yeah. घर वगैरह शुरू में नहीं मिलता आपको। Right, exactly. And that's why if you're coming from Pakistan to the US and you're a young guy, like in your 20s, or you're a young person in your 20s, then you'll be fine, because 20-25 साल में आपको रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 40-50 साल के हैं,
आप Yeah. what's the point? अगर आपके बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं, फिर बच्चे का भी मसला होगा, जर्सन मसले होंगे. Why do you want to come here? Like there's no need. If I had a life, if I had a well-off, financially well life in Pakistan, I would not even go anywhere. Like I'm staying here. You know, so it's I mean, लेकिन बाज़ दफ़ा वो एक लोगों Yeah, को I होता है कि totally बस agree with you. I see here like because my father-in-law, he works a lot with students. So the problems he tells us, they have a lot of problems. Like they bring now तो Germany ने कह दिया कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आए तो अपनी फैमिली को नहीं लेके आ सकते, which is a good thing क्योंकि वो स्टूडेंट्स अपनी फैमिलीज को ले आते हैं, फिर they kind of gets into a lot of trouble और उनके इतने मसले होते हैं, they don't know where to go and हमेशा फिर एक आधा बेबी यहाँ हो जाता है and then the woman has to go back because को वीजा नहीं मिलता है and all that. तो it was always an issue. So उन्होंने कहा कि आप अगर स्टूडेंट वीजा पे है तो आपको फैमिली के लिए वीजा नहीं मिलेगा. I also know a lot some families and बेचारी लड़कियां ट्रेन पे कैसे बैठना है, मार्केट में जाके ऊपर से लैंग्वेज का इतना इशू है, सो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, फिर वो ये बात बेबी प्लानिंग वाला सीन आ जाता है, they are always expecting and then you have to get a driving license and driving license के लिए यहाँ पे बहुत खपाई होती है, मतलब इतने पैसे देने पड़ते हैं. Guys, you talked about Pakistan and back home with such, passion and, love and everything. Okay, I really want to tell you guys, I'm stuck here and I can't travel back home. And now I feel like missing home and I miss Islamabad so much. Homesick. Manahill, you can go from Turkish Airlines, trust me. PIA समझ जाना. Yeah, PIA समझ जाना. PIA समझ जाना. 1/3 आपके pilots नकली हैं. नकली Yeah, I है. was shocked till इतनी sad news है. PIA, the only Pakistani airlines. उसमें भी corruption है. Syrian Air, Air Blue और सारी airlines हैं, लेकिन obviously जो national सबसे बड़ी airline है जिनके पास बड़े जहाज हैं, that's like PIA. नहीं, हमारी PIA तो मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस. हम तो बचपन में कहते थे PIA थप्पड़ खाइए, तब तो सच्ची मुच्ची हो गए. No, honestly saying, PIA के लिए PIA really needs to rebrand itself. I mean, and literally अपना नाम ही change कर लेना चाहिए अब तो. Yeah. Manahill, that also needs like a lot of investment and everything. Exactly. Yeah. मुझे तो लगता है इमरान खान बेचारे ने जितने भी वादे किए थे, मैं जॉब्स लेके आऊंगा पाकिस्तान में, कितनी जॉब्स लानी थी? 2 million. इसको पता चला है कि कितना बड़ा ये मतलब ये कितना बड़ा मसला है मेरे हाथ में कि इसको मुझे ठीक करना है. It's gonna take a long time. Yeah, a lot. I don't know if I did not voted for him because I was here, but I was a pro person and all of my in-laws were Muslim Nawaz Noon League. Yeah. And I was the only one PTI wala. So I fighted for this guy. और अब मुझे लग रहा है मेरी नाक कट गई है. So I bet it on the wrong horse. नहीं अभी तो हुकूमत के कितने 3 साल रहते हैं ना, अभी तो इसका दूसरा साल है अभी. So he still has 3 years left. I think इस बेचारी की किस्मत is very खराब. पहले पनामा. मेरा ख्याल से I think इसने 10-15 साल रहना है. And मैं हबीब को भी बताते रहता हूँ कि they need to groom somebody. They need to groom somebody. क्योंकि जैसे People's Party का तो बिलावल है, वो तो किसी वक्त बन ही जाएगा. Even though I don't even like Bilawal, to be honest with you, but वो किसी दिन बनी भी जाएगा. But they have a spokesperson. I think he has a very feudalistic mindset. I don't like. Feudalistic mindset है उसका, and he has that narrative going from कहते हैं उसकी अम्मा भी प्राइम मिनिस्टर थी, उसका नाना भी प्राइम मिनिस्टर था, तो वो उसका नाम चल रहा है बस. ठीक है ना, उसका नाम चल रहा है. But PTI needs to groom somebody. Maybe Asad Umar, maybe वो जहांगीर खान तरीन का बेटा जो है, maybe him. I was just talking to him and I was saying that Imran Khan is a very nice speaker. He's not a good decision maker and he is maybe not a nice leader also, but he has the power to control masses and change their mindset. तो पीछे जो आपने अपने advisors रखे हैं वो ही ढंग के रख लो कि वो they give you nice advices. आप front पे आ जाओ. To which I responded when he said कि मैं इनको रुलाऊंगा, he meant अवाम. He was basically talking about us. नवाज शरीफ को भी और ज़रदारी को रुला के रख दिया, that's for sure. I mean, और अब हमारी बारी है, now it's our turn. I'm very pro PTI, I'll be really honest. I understand his struggles and I feel really bad for him because he has to like उसका बहुत मसला चल रहा है, बेचारा इतना कोशिश कर रहा है चीजें करने की. Besides, लेकिन I'll be honest, like उसने सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो लोगों से क्या नाम है रिटर्न करवाए. टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा हुआ है हमारा पिछले साल, और हमारा बजट भी इस दफा कदरे क्या कह सकते हैं, $500 billion rupees or dollars he paid. And I think he's trying his level best to work, and हमारी international image के ऊपर he's working a lot and he's working a lot on media and curriculum and everything.
बट एवरीथिंग विल टेक टाइम बिकॉज हमने बहुत बहुत खराबी की हुई है और करप्शन को जड़ से पकड़ के निकालना बहुत मुश्किल काम है. वी जस्ट नीड टू यू नो बी पेशेंट विद हिम एज मच एज ही बीइंग पेशेंट विद अस. उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज है ना, दे आर रियली गुड. उसने अमेरिका के साथ ही बना के रखी हुई है, उसने सबके साथ बना के रखी हुई है. His foreign policy has just been impeccable. उसने मोदी के साथ जो किया ना, that is the best thing. हाँ, जो मोदी के साथ किया. He gave him a very tight slap प्यार से, और फिर पीछे बैठ के he just enjoyed the show. So India got insulted on international level, I think 4 to 5 times. और आज भी there was a drone shot it down by our army. India का spy कर रहा था, इसको वो गिरा दिया. So I'm like, ये क्यों कर रहे हैं इंडियंस? कोरोना चल रहा है, अपने लोगों को संभालो. आपके लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, आप हमारे अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हो ज्यादा. कुछ लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं भी अब तो शायद पता नहीं नैरेटिव चेंज हुआ या नहीं. लोग तो कह रहे हैं कि कोई कोरोना शुरोना नहीं है, ये बस ऐसे ही बनाया हुआ है उन्होंने ताकि हमारी मस्जिदें बंद हो. ये पाकिस्तान में तो yes. Pakistan में that is the narrative. No, I also heard. I went to this जनाजा ना, so वहाँ पे भी काफी लोग कह रहे थे कि तुम जानती हो किसी को जिसको कोरोना? नहीं. मुझसे पूछे, मैं बता देती हूँ किन किन को है. I'll start naming people left and right in Pakistan. मैंने कहा मेरी खाला को है, पाकिस्तान में हुआ था, ठीक हो गई वो. Yeah, मैं तो पाकिस्तान में हूँ भी नहीं, but I've heard of several people actually. A few in my family, and then actually 1 or 2 on Discord as well who have got corona. Oh, really? The problem is everybody is reacting different to this disease. Exactly. Some people get very sick. Some people they don't even know that they have something and it's gone. And after that few days, oh, I had corona or something. They get it tested or something. Yeah. And some people have very mild symptoms and all that. Like my mamu and my khala both got corona, and my chachu also. And they are all, mashallah, okay. Yeah, like so many people have got it. वो तो ठीक है, लेकिन the point is when people start questioning ना कि है भी कि नहीं. मुझे तो लग रहा है, like I'll be honest, my friend's father who is a retired army officer, उनकी बेटी को हुआ तो उन्होंने कहा ये तुम लोग गलत कर रहे हो. उनकी बेटी बड़ी वाली डॉक्टर है, उसने बेचारी को टेस्ट करा दिया. अंकल ने घर में रोला डाल दिया कि कहते अब मेरे घर के बाहर आके पुलिस खड़ी हो जाएगी, मेरी कितनी बदनामी होगी. मैंने कहा अंकल बेटी मर जाएगी आपकी, आपको उसकी फिक्र नहीं. फिर अंकल उस बेचारी के कमरे में गए, बेचारी सेल्फ आइसोलेट करी, अंकल ने उसे हाथ से पकड़ा कि बाहर आके हम सब के साथ बैठो. बेचारे घर वाले परेशान हो गए कि अब हम मरेंगे, किसकी मरने की बारी है सबके साथ. तो अंकल इज लाइक वो इतने लीथल हुए हैं. और काफी लोग ऐसे समझते हैं कि कोई साजिश है ये इस्लाम के खिलाफ, या हम नमाज ना पढ़े, थिंग्स लाइक दैट. यहूदी साजिश है भाई ये. लेकिन ये साजिश सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं है ना. ये जो अमेरिका में सबसे ज्यादा दहशत पड़ी है. चाइना और अमेरिका की लड़ाई है जो 5G पे हुई थी, वो कोरोना पे खत्म हो गई. वो भी कह रहे हैं 5G आ जाएगा तो फिर उसकी जो वेव्स हैं वो भी कोरोना को फैलाती है. ये भी कंस्पिरेसी थी. देयर इज द कंस्पिरेसी थ्योरी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो कंट्रोल करने का तरीका है. लाइक Thanos. Yes. क्योंकि वो कह रहे हैं कि 20 साल में जो है ना, इस वक्त 7 अरब है, तो 2 साल में जो 20 साल के बाद जो है ना वो 9 अरब की पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उसको कम करने. पाकिस्तान की तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. I don't believe it's a conspiracy or something, but it's nice to hear that हमारे लोग बहुत different perspectives से सोचते हैं. So as Habib said that we are the most populated, not the most, but birth rates very high. Yeah. More people means more mindsets. So we are not using them to produce something productive. Rather than we're sitting home and doing diagnostic discussions. ये तो यहूदी साजिश है. क्योंकि सलाम करने से रोकना है ना, गले लगाने से रोकना है, इसीलिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी सफाई खराब कर जा सकते. इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल आवर माइंड्स टुगेदर, इतने 200 पता नहीं कितने करोड़ की आवाम एक अच्छी चीज बना ले, कोई वैक्सीन ही बना लो यार. बट नहीं. We are trying ना. जो सबसे पहला, उसका इतना बड़ा नाम है DXamile something, I am not so sure, but वो सबसे पहले I think पाकिस्तान से शुरू हुआ है, and it's मतलब a big vaccine type drug है, and it works for a lot of people. Manahill, वो जो D वाली drug है ना, so you read about it ना, it was vanished from the pharmacies. Yeah, it was vanished from the pharmacy. I'm telling you what Pakistan is doing. Like NAS से काफी ज्यादा national universities में भी काफी लोगों ने सबसे पहली किट बनाई जो सबसे लोअर कॉस्ट उसकी बहुत लो थी, और उसके अलावा अब टेस्टिंग ड्रग्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं और वो इंक्यूबेशन सेंटर में बन रहे हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई एम होपिंग कि कुछ अच्छा हो जाएगा. लाइक आई एम जस्ट होपफुल. इंशाल्लाह वैक्सीन इज गोइंग टू कम बट नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. आई थिंक ये इधर ही बना रहे आसपास के अमेरिका. ऑक्सफोर्ड में हो रही है ना एक रिसर्च हो रही है वैक्सीन की. ऑक्सफोर्ड में रिसर्च हो रही है, और वो आई थिंक टेस्टिंग शुरू हो गई है इंग्लैंड में एक वैक्सीन की.
वो ऑक्सफोर्ड की है मेरे Yeah, पास but then there will be a debate that if you will get this vaccination or not, because a lot of people saying they are now saying that it affects your genes and all that. इसमें ट्रैकर है. Yeah, also tracker and all that. ये भी सुना था मैंने, ये भी सुना था कि ट्रैकर है. Will you get the vaccine or will you not get the vaccine? No, I'll get the vaccine. I'll get the vaccine क्योंकि यहाँ पे हर साल हम वैसे भी फ्लू की वैक्सीन हम लेते हैं. So for me, I mean, corona vaccine, okay, it's a new vaccine. Maybe I'll wait to see if there's any side effects or anything like that. I believe कि मेरे अंदर ट्रैकर लगा हुआ है. यार ट्रैक कर ले, मैंने कहाँ पे भाग जाना है. ट्रैक कर लो भाई. लोग पता नहीं पाकिस्तान में अपने आपको समझता है कि मैं इतना अहम हूँ कि मुझे गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है. आपको आपके पीछे क्यों पड़ी है? आपकी कितनी वेल्थ है आपके पास? आपने क्या छुपा के रखा हुआ है? आपको ट्रैकिंग की फिक्र है? आपका जो फोन है ना, आईफोन वगैरह, एंड्रॉइड वगैरह, उससे भी आपकी ट्रैकिंग हो रही है. सब सुनते हैं. I was just talking to my husband. I said मैं ना कल पाला गोश्त बनाऊंगी. And my YouTube started giving me पाला गोश्त recipes. Like ये सब सुन रहा है. Yeah, there you go. Exactly. सब सुन रहे हैं बेटा, सब सुन रही है. तो कोई ट्रैकिंग वगैरह, ट्रैकिंग तो हो ही नहीं है भाई. ट्रैकिंग कौन सी? और मैंने कहा किसी वक्त हमारे अंदर ना चिप डाल दी गई है. मैं आपको बता रही हूँ, मैं सोचती हूँ चीज, उसका ऐड आ जाता है. ऐसा क्या सोचता है? अच्छा, the funny thing is कि यहाँ US में, क्योंकि most social networks are based over here, right? We are aware and we're pretty familiar with getting tracked by every company. Facebook हमें track कर रही है, you know, Google हमें track कर रहा है, whatever we are searching, whatever we are checking. और फिर on top of that, the FBI, CIA, उन्होंने हर बंदे पे नजर रखी होती है. To be honest, they have a database full of all of us, right? लेकिन यहाँ पे वो app आ गया TikTok, which is a Chinese app. And then suddenly there was a big privacy concern. Government हमें messages भेज रही है, do not use TikTok. There might be privacy. China might be collecting your data and things like that. And I'm like, यार वो आपने मेरा सारा डेटा पकड़ा हुआ है, मुझे चाइना मेरा कलेक्ट कर ले, तो उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ लेना है? आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, कहाँ रहते हैं, कहाँ लोकेशन है, कहाँ ट्रैक है, सब कुछ पता है. उससे सेलर मैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा डेटा लेके क्या करेंगे? गाने सुनती रहती हूँ. Right. As long as you have a clean life, you have nothing to worry about. Yeah. खैर अगले टॉपिक पे चलते हैं. चलो, इमरान खान की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे. इमरान खान डिसाइडेड टू प्रमोट दिस शो, राइट? ये पूरा हंगामा ऐसे ही शुरू हुआ कि अर्तुगरुल, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस शो के बारे में पहले सुना हुआ था. मैंने पहले वही बताया, मेरे भाई देख रहे थे शो को, तो मैंने सोचा वही बात आती है ना कि यार 5 सीजन, 400 450 एपिसोड्स किसी दिन देखेंगे शायद, लेकिन कभी मैंने शुरू नहीं किया. देन दिस होल हाइप स्टार्टेड हैपनिंग. And that was because of Imran Khan, probably the biggest influencer that I've known at least. Influencers काफ़ी होते हैं, celebrities वगैरह जो shows को promote करते हैं, content को promote करते हैं, you know, products को. लेकिन इमरान खान promoted in such a way कि पूरा मुल्क आपका देख रहा है इस show को. Yeah, I did. So was that a good decision or not? Should the Prime Minister get involved in something like that? I think Manahill, you can start. I'll be honest, I think that Imran Khan bases all his narratives on Islam. He tries to preach Islam in all of his, you know, बड़ा कोशिश करता है and he's been successful in it. So कि वो pretend करता है कि मैं बड़ा करीब हूँ अल्लाह के, बड़ी कुछ मैं इबादतें करता होगा, I'm not so sure, but like it just comes off really preachy. And so it was his way of saying कि जी आपको अब ये शो भी देखना चाहिए. As a strategy to enhance his image was good, but to promote content such as resurrection, अर्तुगरुल वगैरह, ये जो भी इस तरह, मतलब ये जो शो है या इस तरह का कोई और भी शो होता, I don't particularly think it just falls into good taste. I just don't particularly think that it should have been his. It's not his. He could have said कि you know ऐसा शो बनना चाहिए to a bunch of producers. He could have called producers and said देखें आपको ये शो बनाना चाहिए. जैसे मुझे लगता है मोदी साहब ने बुला के अपने you know बॉलीवुड के लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा देखो मेरे खिलाफ बात नहीं करनी, जो भी करना है don't ever stand up against me on your Twitter feed or whatever, and whoever goes to Modi Bhavan, whatever the Prime Minister Bhavan होता है जो भी, वो वहाँ जाते हैं और उसके बाद nobody has the audacity to stand up against Modi, you know, because the Prime Minister has actually asked you to do so. So given के Prime Minister has the capacity to do, तो वो PTV वगैरह को गाइड कर सकता है कि यार आप ये शो देखें, आप इसके बारे में बात करें, आप इस तरह का शो बनाएं. I think more or less जो हमारे celebrities को भी जो बुरा लगा वो यही बात लगी होगी at that very moment is कि the Prime Minister being such an influential person just did not talk about his own local content in terms of teaching Islam or in terms of looking for good historical lessons, but he talked about an international content that could have been handled pretty well by him if he could have just like you know personally asked the producers कि यार ऐसा ड्रामा बनाए आप लोग, ये सास बहू के और ये जो पहली शादी दूसरी शादी के बाद फिर शादी to the same person and इस तरह की चीजों के ऊपर बात करना खुदारा बंद कर दें.
So that could have been like way better. I personally think that he shouldn't have. But if he has, तो अच्छा ही ड्रामा है, मतलब बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी he shouldn't have. वैसे में नाहिल अगर सोचा जाए, अगर इमरान खान डायरेक्टली हमारी इंडस्ट्री के साथ बात करता है, राइट, हमारी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स वगैरह, कि यार आप ऐसा कंटेंट बनाएं, तो क्या उसका इतना इफेक्ट होना था जिस तरह इसने ये ड्रामा इंट्रोड्यूस किया हमारी ऑडियंस को, एंड इज गेटिंग डब्ड इन उर्दू एंड बीइंग प्लेड ऑन पीटीवी, उसने ऐसे लगता है जिस तरह पूरी इंडस्ट्री को शेक कर दी है. लाइक हमारे जो एक्टर्स हैं खासतौर पे, जो आप इंस्टाग्राम पे रो रहे हैं काफ़ी, उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, वेयर फॉर सम रीजन दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड. और मुझे लगता है शायद अगर इमरान खान वेंट द अदर वे वेयर ही ट्राई टू स्पीक टू देम डिप्लोमेटिकली कि यार आप ऐसा कंटेंट बनाएं, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होना था, वो छोटा सा आर्टिकल बन जाता शायद. I think that could have been the case, but that would have been like you don't just particularly go against a whole industry of your own. अगर देखा जाए as an industry person, I would say कि if my prime minister just stands up and say कि यार आपको देखना चाहिए ना कि इंग्लैंड में PR कंपनीज या मीडिया कंपनीज कितनी अच्छी चल रही हैं, तो you just go like, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे से जो काम कर रहे हैं, we are creating something, we need to at least acknowledge our efforts as well. But being said that, he did not say that our content isn't good, like our content isn't nice enough, but he just didn't even mention it कि हमारे ड्रामे होते हैं जहाँ हम बहुत सारी स्पिरिचुअलिटीज की बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा वेल मेड ड्रामास भी होते हैं at times. I mean, Aleph is one of the prime examples, like जो बहुत अच्छा spiritually well crafted, very well created, and टेक्निकली भी देखा जाए तो बहुत अच्छा ड्रामा था वो, लेकिन उसको बिल्कुल you miss the mark. Just don't even mention your local content. You just go ahead and you an international content, just like आओ यार सारे मिशन इम्पॉसिबल देखें क्योंकि बाकी कोई अच्छी मूवी नहीं है. तो if like Trump says that your whole हॉलीवुड में आग लग जाएगी, लोग कहेंगे सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल अच्छी थी, लेट मी रिमाइंड यू ऑल द अदर्स आर गुड इनफ. बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप अपना कंटेंट को या अपनी लोकल प्रोड्यूस को आप अप्रिशिएट नहीं करते हो और इंटरनेशनल को करते हो, तो फिर दैट कुड क्रिएट हैवक, बट इट हैज टर्न्ड आउट राइट. Yeah, it worked out, yeah, but there were some side effects, some bad feedback from people. We saw some of the tweets. I think the bad feedback was very ill structured. I mean, अगर ढंग से करते कि यार आप अपने कंटेंट का तो नाम ले लेते, but ठीक है, good drama whatsoever, but please try and mention our, let us, like Ushna Shah said कि there are only two great singers in Pakistan, and then Hadika Kyani clapped back and listed all the nice female artists, and she went like, you should look into that. So it just clapped back. You just need to like structure your negativity in a way that it creates sense. Like if you say कि जी like Shan said कि मुझे वजू नहीं सिखाना पैसे लेके, तो I was like पैसे लेके फिर ठीक है डांस करना सिखा दो, very good. खेतों में जाके नाचना शुरू कर, good. Right. Yeah, and that's the other thing. But I also saw a video on YouTube actually with Zakir Naik. So Zakir Naik was being asked this question: is the drama? Yes, he said it's haram. Brother asked a very good question. Brother asked, is Ertugrul a good drama to watch? Is it halal? मैंने सोचा यार ये बंदा अभी भी जिंदा है. I didn't know he was too relevant today, but he's making videos. That was a good impression. You got do that again one more time. I don't know if I can do that again. Yeah, but I'll share that video with you guys. मैं उसके बारे में भूल ही गया बात करना. But yeah, he was asked that question. There were a few more articles on the internet that I saw where people were asking, is it halal to watch? और फिर मैंने यही सोचा कि लोग इस ड्रामे से, or maybe from Imran Khan's message, they're getting the wrong impression. They're thinking that this is a lecture on Islam. This is not. इसमें romance डाला हुआ है. वो तो उसका हाथ चूमता है और हलीमे बाजी का उसको घोड़े पे लेके जाता है साथ, और वो उनके हाथ पकड़ के भाग रहे हैं, like it's not necessarily bad or something you should judge, but it's not. इसमें काफी चीजें बदली भी हुई हैं, right? Not everything went down in history the way this drama shows. Obviously, काफी चीजों को dramatize किया. Obviously, they had to obviously over exaggerate it, just like any other show. So, but that's obviously a given. Considering if you're gonna make a show, you have to make it a little bit. You have to make it entertaining, yeah. Entertaining a little bit. Because real life is boring. Real life, nobody cares about real life. तो उसको थोड़ा बहुत बदलना पड़ता है कई बार. Yeah, exactly. Yeah, थोड़ा बहुत बदलना पड़ता. Just to dramatize it, yeah. It's true, I guess. In a way, it was a good experiment. I think no prime minister has ever hyped a show the way this prime minister has. But the overall effect of it seems to have been good. थोड़े industry को उसने shake up कर दिया. There might be some negative feedback.
There might have been better ways to do it. But I'm very interested now कि Pakistani directors or producers अब क्या लेके आते हैं हमारे सामने after this. Nothing. I don't think that's gonna make any don't put change. your hopes in it. Like Myrah said, nobody They is will gonna not do it. learn. It's going to be the same Saas Bahu masala. It's going to be the same. Oh my God, Flani ne. Yeah. मतलब मैं तो अभी ज़िबाइश में जैसे ज़िबाइश is a new drama and I think nobody should watch it because उसमें भी ना मज़ार बनाया है और वो like अम्मा TV और मैं I'm literally promoting that show on this. But like उसमें like अम्मा mentioned that you know इतना सस्ता मज़ार है कार्डबोर्ड पकड़ के ना लगा दिए and I was like that is so true. आपको इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो हम The टीवी show जैसा itself is so bakwas. I don't know what they're trying to show. They're trying to show the girl who works in the media is not a good housewife. And if she tries, the husband is not happy. And the husband, the men are wrong that the woman is trying, but the husband still finds another woman to marry. I don't know what they're trying to show. ऊपर से इमरान खान वाली बात पे I would love to add that what you said ना Manahill said that it was a very risky move which turned out right but on international level I think it will look very bad that Ertugrul में they're like fighting and we are already stereotyped in the whole world and all that and it's as Habib said that everybody is taking it wrong that it's about Islam Yeah. so a Pakistani जहाँ पे Osama bin Laden भी था and all that and blah 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 और अब तो उसने शहीद भी कह दिया मैं तो Oh शहीद my भी कह God, दिया so do prime not minister get me started on that, please. yeah so prime minister promoting such a show was a very risky move I hope it future में जाके it will not create problems but it doesn't look good on an international level yeah like you should not get into media you should just yeah or at the time when your own country is facing a lot of problems focus on that and you are appointed फिर to वो solve those फिर वो problems opposition को बात मिल जाती कहने के लिए ये तो सिर्फ Yeah. मीडिया पे फोकस करते हैं. I even saw an Indian article actually on an Indian website जहाँ पे उन्होंने लिखा होता Prime Minister of Pakistan is binging Ertugrul while his country is suffering from coronavirus and various other economic issues. oh my yeah God see so on international level we are not Coincidentally, that letter was written by a Pakistani, but they were writing for an Indian or a newspaper. I don't know why. That is a guy. I think I know him. He is always saying bad things about Pakistan. He's on TV. I don't know what his problem Yeah. is. I think we didn't give him much love. ये जलेबियाँ नहीं खिलाई उसको सही. जलेबी उसको इंडियन जलेबी ज्यादा पसंद आई. And he's like one of those guys. आलू की बिरयानी आलू के बगैर वाली बिरयानी में हाथ कोई उसमें से but Imran Khan should not get involved Yeah. he did promote it nicely he did everything turned out nicely it was a good thing for him but he should not do it in the future he should focus on the problems Yeah. on ground And like I said, yeah, he should definitely promote local content instead of just promoting international content. It's good, but I get the point that he's trying to portray in that. He's trying to portray that अपने इस्लामी इख्तियार सीखने अपने सब चीजें सीखनी. So it's good to you portray all that, but at the end, yeah, just लेकिन फिर वही बात वही आ जाती है ना फिर वही ऑपोजिशन को बात मिल जाती है कहने के लिए ऑपोजिशन को तो खैर कोई उनको वैसी मौका चाहिए तो कोई बात कहने को लेकिन बात मिल जाती है तो भाई ये किसी चीज फोकस ही नहीं करते ये तो काफी इस चीज में लगे रहते हैं मीडिया के ऊपर ये वो काम ही नहीं कर रही है वो. So yeah, I think it's good that he influenced it. I think it gives our हमारी आवाम को बहुत अच्छा एक मौका मिलता है कि एक different content देखने को मिलता है उन्हें. So I think it's obviously very good that you obviously our people get exposed to it, and then you have different types of content that people can actually prefer to watch instead of the typical Saas Bahu drama. So yeah. I think he should वो Manahill वाली बात ही he should have hired somebody to do this part of job for him more मतलब media related person कौन हो सकता है for example किसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है पाकिस्तान में आतिफ असलम पता है किसकी सबसे ज्यादा सुनी जाती है मौलवियों की. That's just how we were discussing मौलाना before. तारिक जमील को कहता है सर आप ही हमारा काम कर नहीं उनकी बात ना करो उनको वैसे ही क्या नाम है बेचारे को दुआ के लिए बुलाया था उसके बाद माफिया मंगवा दी हमारी Manahill please don't get me started on that sorry मुझे बहुत अच्छे लगते हैं add to Habib's point when he said ke wouldn't it be like it wouldn't have created much waves if he had invited producers वगैरह personally it just popped into my head that Imran Khan actually called digital influencers and he talked about TikToks वालों को भी तो बुलाया था yeah like उन्होंने गवर्नमेंट ने बुलाया टिकटॉकर्स को but like for digital influencers like हमना रजा होगी नहीं हमना रजा का हस्बैंड था
They wanted to spread awareness about corona, I think. No. When they called digital influencers, he wanted to talk about what he envisions for the digital space in Pakistan, digital initiatives. लोगों से उन्होंने personally ना, he talked to Aqsa Amir, he talked to Arsalan Nasir, he talked to Muzammil, everybody, you know, all of these people. So that actually created something, you know. वो आप अपने personal content को, उनको क्या पता, उसने बोला कि आप देख लिया करें, क्या नाम है, लेट्स सपोज मेकअप इन्फ्लुएंसर्स को कहा होगा जेफरी स्टार को ही देख लें कितना अच्छा मेकअप करता है, तो यू नो लाइक मकबैंग्स देखें, आप कुछ भी बोला होगा, वट एवर ही इज वॉचिंग ऑन डिजिटल मीडिया, वो उसने उनको बताया होगा, इट probably it would have created some change or whatsoever, but in a way it just came out like very personal. So a lot of people I'm sure have complied to whatever he wanted, and वो उसकी इस campaign का part भी होंगे, whatsoever is that. So I think that was a very well articulated move, and I think there should have been two, but again, like luck has it, and it has worked out. But that could have been like a very good way of promoting international content, but giving a nudge, you know, like or pushing it into hyper speed, your local content. Right. Yeah. Thanks for coming on again. Okay. Thank you. No problem. Yeah. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Shabba khair. Allah Hafiz. Shabba khair. Shabba khair. Allah Hafiz.